Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. The first responders arrived at the scene of the house fire right in the dead of night. And, the air was just thick, suffocating. It smelled like burning wood and melting plastic, and the darkness was totally fractured by these frantic red and blue emergency lights flashing everywhere. A completely chaotic scene. Exactly. And standing out on the curb, illuminated by the blaze, was the homeowner, a man named Ross Compton. He was completely breathless, his clothes smelled of ash, and he had this really harrowing story to tell the officers who approached him. Right, because you ask, what happened here? Yeah, and he explained that when the flames broke out, he just panicked. He described running frantically through the burning house, hastily packing up several of these really heavy suitcases with his most prized, irreplaceable possessions, then making this desperate escape, breaking a window, throwing the heavy suitcases out before him, and running into the night. Wow. And standing there, looking at the total devastation of his home, his story sounded entirely plausible. It does. It's the kind of visceral survival narrative that naturally just elicits a profound sense of sympathy. You hear a story like that, and your human instinct is to comfort the survivor. You don't immediately think, oh, this guy is lying to me. Right. But the detectives working the case, they started looking at the physical evidence. They started looking at the timeline Compton was giving them, and the subtle friction developed. Things weren't adding up. Exactly. The sheer physical exertion required to sprint through a burning structure, haul multiple heavy suitcases, smash a window, and escape. It didn't quite align with his demeanor or the rapid spread of the fire, but rather than hauling him into an interrogation room, trying to break his story through traditional pressure tactics, they tried something completely unprecedented. Because they found out about his medical background. Yes. They learned that Compton had a pre-existing medical condition, and because of that condition, he had a smart pacemaker implanted in his chest. And this is where it gets crazy. It really is, because this wasn't just a mechanical metronome keeping a beat. It was a highly sophisticated biometric device. It continuously monitored, recorded, and transmitted his cardiac data to a receiver and ultimately to his cardiologist. Right. So the detectives drafted a search warrant, and they pulled the data not from his phone or his computer, but literally from his heart. And that is the precise moment this story shifts from a tragic suburban accident to a profound legal and technological watershed. Oh, for sure. Because a pacemaker doesn't just measure a simple pulse anymore. It records the P waves, the electrical activity of the atria, the physical exertion, the breathing rate. It captures a high-resolution, time-stamped physiological portrait of a human being. And the physiological portrait recorded by that smart pacemaker told a story that fundamentally contradicted the breathless, chaotic tale Compton had just fed to the police. The data didn't match the narrative. Not at all. His heart rate, his specific cardiac rhythms at the exact time the fire was allegedly raging and he was supposedly sprinting through the smoke, they didn't show a man in a state of sheer panic. Wow. They didn't show the massive spike in adrenaline and exertion required to haul heavy suitcases out of a window. The data was calm. The data showed a man at rest. It pointed clearly to premeditated arson, committed for the purpose of insurance fraud. That is just incredible. He wasn't betrayed by an eyewitness, or an overlooked footprint in the mud, or a careless text message to an accomplice. He was betrayed by his own digital heartbeat. It is a profoundly chilling image when you really sit with it. Yeah. The very medical device implanted inside his body to keep him alive, monitoring his most intimate biological functions, was silently transformed into a witness for the prosecution. Right. It was testifying against him in a court of law with a level of objective precision that no human witness could ever provide. It sets the stage so perfectly for the conversation we are embarking on today. We are looking at a brilliantly crafted, urgently necessary book titled Your Data Will Be Used Against You: Policing in the Age of Self-Surveillance, authored by Andrew Guthrie Ferguson. Such an important piece of work. It is, and it's crucial to understand exactly whose voice, whose expertise is guiding this analysis. Andrew Guthrie Ferguson is professor of law at George Washington University Law School. He is a national expert on new surveillance technologies, policing, and criminal justice. He is the author of the 2018 Pierre Rose award-winning book, The Rise of Big Data Policing, and he is an elected member of the American Law Institute. So we are essentially in the hands of a true legal scholar who has dedicated his entire career to understanding the intersection of constitutional law and emerging technology. Exactly. His perspective is vital because he doesn't just look at the technology in a vacuum. No.
He examines the invisible architecture of power that this technology creates. Right. Now, before we really start unpacking his work, I just have a quick update for our regular listeners. Starting from March 2026, we have become a weekly podcast featuring episodes on every Sunday and Monday. On Sunday, we will do a classic paper or a book review, while our Monday episode will keep the focus on publications from top-tier, peer-reviewed journals. We love our loyal subscribers, and thank you for supporting this initiative. AI-assisted podcasts are heavy on nature and climate with considerable water intake by the back-end data centers. Limiting the podcast weekly release is our way to give back to the climate change initiative without losing the richness of our podcast discussions. It's a really necessary balance, and we're just so glad you're here sitting with us for this one. Absolutely. So whether or not you subscribe to this channel, kindly make time to read this thoughtfully crafted book. The link's in the show notes. You really won't regret it. And I want to frame how we are going to approach this material today. If you are someone new to academic research, maybe you were just about to start your own research journey, we are going to break down the structure of this book chapter-wise. Which is so helpful for understanding how an argument like this is built. Exactly. We aren't going to get bogged down in dry textbook definitions. We are going to look at how a scholar takes incredibly dense constitutional law, like the Fourth Amendment, digital privacy, statutory regulations, and builds a narrative flow that goes logically from the deepest, most intimate spaces of our lives all the way up to the macro level of our cities. And we are going to look at the mechanics of this surveillance, how it actually works on a technical level. Because that is the crucial part, right? To understand the legal threat, you have to understand the mechanism of the technology. You can't regulate what you don't understand. Exactly. You can't fight a ghost. So let's start right at the beginning. The illusion of choice and the surveillance trap. Ferguson opens his argument with a scenario that I think every single person listening to this right now will recognize. Oh, definitely. He describes a moment standing in front of his law school classroom. He looks at these bright, young, highly educated students, and he asks them a really simple question. He says, "How many of you have used a physical paper map to navigate anywhere in the past year?" And you can just imagine the silence in that room. Oh, yeah. Not a single hand goes up. A paper map is basically an ancient artifact to them. Right. Then he asks, how many of you have printed out directions from the internet, like old MapQuest directions, or stopped to ask a human being for directions? Again, absolute silence. Total silence. Finally, he asks, how many of you use your smartphones or the digital navigation systems built right into your cars to get where you need to go? And instantly, every single hand in the room is in the air. Because it's a universal behavior now. Yeah, if you are driving to a new restaurant or if you're walking through a new city, you just pull out your phone. It's automatic. But this is where he springs the trap on them. He looks at all those raised hands and asks, how many of you realize that a permanent record of every single place you have traveled with that phone is available to the police with a simple warrant? And he notes the shift in the room, the sheepish looks, the sudden uncomfortable awareness. It's that moment of realization. Yeah, and then comes the piercing final question. He asks them, knowing the police can track your every move, are any of you going to give up Google Maps or Apple Maps or the navigation in your car? And no one moves. The hands stay down. No one is willing to trade the convenience of turn-by-turn navigation for the abstract concept of privacy. This is such a powerful starting point because it completely dismantles the old school sort of Orwellian idea of surveillance. Oh, so? Well, we have this cultural image of surveillance being forced upon us by a totalitarian state, right? Like cameras installed in our living rooms by shadowy government agents against our will. Like Big Brother. Exactly. Yeah. But Ferguson is pointing out that the modern surveillance state isn't something happening to us against our will. It is a trap we are eagerly, willingly building ourselves, simply out of a desire for extreme convenience. We are buying the sensors, carrying them in our pockets, and paying monthly subscription fees to keep them connected. We are funding our own tracking. Now, to really illustrate the sheer volume of data we are shedding, what is often called data exhaust, Ferguson introduces a hypothetical scenario. It's a modern-day Romeo and Juliet story. And this is a really important one to break down. It is, and it is vital to state clearly right now, Ferguson uses a very timely, highly charged hypothetical here.
Regardless of where you, the listener, or anyone stands politically, morally, or legally on the issue of abortion, he uses a hypothetical scenario of a couple seeking to cross state lines purely to illustrate the sheer volume and granularity of the digital trail we leave behind. The focus here is entirely on the data mechanics. We are looking strictly at the technology. The underlying activity almost doesn't matter for the sake of his argument. The point is the environment in which the activity occurs. Exactly. We are completely impartial on the politics here. So imagine a young, privileged couple, university students. They find themselves pregnant and living in a jurisdiction where abortion has been strictly criminalized. Okay. They make the difficult, private decision to seek medical services across state lines in a jurisdiction where it is legal. Now, in 1995, this journey would have been a profoundly private secret. You'd pay in cash, you'd drive your car, you'd come home, and the only record is basically in your own memory. Right. But in our current era of self-surveillance, Ferguson walks us through the digital reality of that exact same trip today. And it begins long before they even get in the car. It begins with the intent. Right. It begins with a simple Google search made on a laptop in a dorm room, abortion services near me. That query is instantly logged. It's associated with an IP address, time-stamped, and tied to a user account. It's permanently recorded. Then they get in the car. And as we just established, they don't pull out a paper map. They type the clinic's address into the car's computer navigation system. The car itself begins logging the GPS coordinates of the route, tracking the vehicle's speed and location as it crosses state lines. We really have to talk about how that tracking actually works on a physical level. Yeah, explain that, because I think people just assume it's a satellite looking down from space. Right, but it's much more grounded than that. Their smartphones are constantly communicating with the physical infrastructure of the cellular network. To maintain a signal, a phone is continuously pinging the nearest cell towers. Even if you aren't making a call, even if the phone is just sitting in the cup holder, the telecom provider is logging which tower your phone is connected to, the strength of the signal, and the angle of arrival. So they always know roughly where the device is. Exactly. And by triangulating the data from 3 nearby towers, the telecom provider, and by extension, anyone with a warrant to access that data can establish a precise historical timeline of their movement down the highway. But it's not just the telecom providers doing the tracking, is it? It's the apps on the phone itself. Oh, that's where it gets truly invasive. They probably have dozens of third-party applications running silently in the background. Weather apps, coupon apps, dating apps, mobile games. Just normal stuff everyone has. Right. And many of these apps contain SDKs, software development kits, that are designed by data brokers specifically to harvest GPS location data. So their exact coordinates, down to a few meters, are being packaged and sold on the open market in real time. Just constantly bleeding data. Yeah. So they are driving down the highway, radiating their location to telecom providers and data brokers. Then they arrive at the medical facility. The cell site location data reveals exactly how long they stayed at that specific address. Which is key context. A 45-minute stay tells a very different story than a simple drive-by. Exactly. Meanwhile, the physical environment itself is watching them. The highway they drove on is equipped with automated license plate readers, ALPRs. Those are everywhere now. They are. These are high-speed cameras mounted on overpasses or even just on the back of police cruisers that capture an infrared image of every passing license plate. They convert it to text using optical character recognition and store it in a massive database with a timestamp and a GPS coordinate. And toll booth transponders like EZ-Pass, they log their passage as well. Yeah. Plus, you have public surveillance cameras on the street corner outside the clinic capturing the make and model of the car, and perhaps even their faces as they walk inside. It's just a gauntlet of sensors. And Ferguson points out that you can drill down even further into profoundly intimate data. Right, the biometric stuff. Yes. You look at the young woman's smartwatch, it is continuously monitoring changes in her vital signs, her resting heart rate, her stress levels. You look at the period tracking app on her phone, which holds a meticulously logged history of her menstrual cycles. Which is incredibly sensitive medical data. Completely. You look at the encrypted text messages she sends to her worried mother, and this is a big one. Even if the content of the message is encrypted, the metadata is not. Right, the metadata being who she texted, exactly when and from what location. That's entirely visible to the carrier. Exactly. And then you look at her digital wallet, logging a purchase at a pharmacy on the drive home. When you step back and look at that vast, interconnected web of digital clues, the illusion of privacy
completely evaporates. Her actions, her health status, her physical movements, her associations, they are all transparently available for anyone with the legal authority, or sometimes just the financial means, to look. It's overwhelming, and it brings up a deeply uncomfortable question. If this trap is built entirely on our desire for modern conveniences, for easy navigation, for knowing our daily step count, for paying for a coffee with our watch, is Ferguson suggesting that participating in modern society fundamentally requires us to forfeit our expectation of privacy? That is the big question. I mean, are you literally just by existing and participating in the digital economy perpetually one warrant away from incrimination? That is the core anxiety driving the entire book. And to truly grasp the inescapable nature of this, we need to follow how Ferguson structures the first part of his argument. Yeah. He doesn't just throw a laundry list of scary technologies at the reader to induce panic. How does he organize it? He organizes them geographically. He moves from the most intimate, historically protected spaces of our lives and slowly zooms out into the public sphere and finally into the abstract digital cloud. It's a method of showing that there is no physical or digital sanctuary left. Let's walk through that geography, chapter by chapter, for the listeners who are really studying how to build an academic framework. He starts in chapters 1 and 2, right where we feel safest, our homes and our things. The home has always been the ultimate sanctuary in constitutional law. The Fourth Amendment was specifically written to protect the home against unreasonable searches by the government. You're right. The whole idea was that when you close your front door, you shut out the state. But Ferguson details the rapid transition of our domestic spaces from containing dumb objects to smart devices. The Internet of Things. Exactly. We used to have, just a simple piece of metal and plastic next to the door that rang a bell. Now, millions of homes have Ring doorbell cameras. And these aren't just local closed-circuit cameras. No, they are connected devices that detect motion, record high-definition video and audio of every single person who walks down the sidewalk, every car that drives by, and they upload that footage directly to Amazon's cloud servers. And we willingly bring the microphones inside, too. Oh, absolutely. We used to have regular alarm clocks and stereos. Now we have Amazon Echoes and Google Homes sitting on our kitchen counters and our nightstands. And the thing about those is, they are, by design, always on microphones. Right, they have to be. They have to constantly buffer the audio in the room, constantly listening, waiting to hear their wake word. We install smart thermostats that know exactly when we are home and when we are away, based on motion sensors. We buy smart refrigerators that track our consumption. He even mentions smart mattresses in the book, which I found totally wild. Yeah, that's a real thing. Devices embedded with sensors that track your sleep cycles, your respiratory rates, your restlessness. Devices that know precisely when you go to bed, when you wake up, and basically who you are in bed with. The home is no longer a sanctuary. It is a networked sensor array. And from the home, in Chapter 3, he moves even closer. He moves to our bodies. The trend of the quantified self. We really want to know ourselves through data. We do. Yeah. So we strap smartwatches to our wrists. We wear fitness trackers. We want to meet our daily step goals. We want to monitor our blood oxygen levels and track our cardiovascular health. We view it as self-improvement. But as we saw with the Ross Compton pacemaker story at the beginning, this biometric data crosses a profound line. It really does. It takes the invisible internal functions of our biology and externalizes them as permanent data points. This data knows if you are running, if you are sleeping, if you are stressed. It basically reduces human biology to a searchable database. Then in Chapter 4, he zooms out. We leave the private sphere of consumer choice and enter the public sphere, our cities. And this is where the scale of surveillance becomes truly staggering, because it is no longer about you choosing to buy a smart speaker. It is about governments mediating your movement through public space. He focuses heavily on the sheer volume of public cameras. He looks at Chicago, for instance, which has woven a network of more than 30,000 video cameras throughout the city, feeding directly into district-level police command centers. 30,000 cameras, that's hard to even picture. It's massive. And then he looks at New York City's domain awareness system. This is a highly sophisticated platform originally developed in partnership with Microsoft that links thousands of cameras, license plate readers, and even radiological sensors across the city. And it's not just passively recording, right? No, it aggregates data. If an officer gets a call about a suspicious package, the system can instantly pull up the nearest cameras, run license plates of cars parked nearby, and cross-reference criminal databases all at once. There is a quote he includes from Mayor Eric Adams regarding this level of surveillance in New York, and it is almost jarring in its bluntness.
Mayor Adams proclaimed, quote, "Big Brother is protecting you." Wow. It's an astonishing rhetorical pivot, taking the ultimate literary symbol of dystopian oppression, Big Brother, and rebranding it as a public safety service. It really shows how deeply the normalization of surveillance has penetrated our political leadership. And it isn't just cameras on street poles either. Ferguson discusses programs that sound like science fiction but are currently operational. He specifically examines Baltimore's spy plane, officially known as the Aerial Investigative Research Program, or AIR. This is a fascinating and honestly terrifying example of wide area motion imagery. How does it work? Ferguson cites the work of a sociologist named Ben Snyder, who actually sat inside the police command center and observed this system in action. The city contracted a private company to fly a small Cessna plane in endless circles above Baltimore. Just circling all day. Yep. And attached to the plane was an array of high-resolution cameras that captured an image of the entire city. Every street, every alley, every car, once every single second. It's essentially a live, rewritable Google Earth of the entire city. Precisely. Snyder observed analysts using this tool to track a murder suspect. And it's crucial to understand how they did it. They didn't just look for a face from the sky. The resolution isn't that good. It looks like a little pixel moving across a map. Okay. But because they have a continuous recording, they can find the location of the murder, hit rewind on the footage, and see the suspect's car arriving at the scene. Oh, wow. Then they hit fast forward and track that single pixel as it drives across the city frame by frame over the course of hours. And when the pixel finally stops? When the pixel stops, say at a gas station, the analysts in the command center seamlessly pivot to the street-level CCTV cameras at that specific gas station to capture a high-definition image of the suspect's face as they step out of the car. That is unbelievable. It is an unbroken, inescapable chain of surveillance from the stratosphere down to the sidewalk. You literally cannot hide. Which naturally leads to the final spaces Ferguson categorizes in chapters 5 and 6. The abstract spaces, our papers and our likes. The digital shadow. Right. He is drawing a direct line to the Fourth Amendment here, which protects our persons, houses, papers, and effects. Historically, our papers were kept in a physical filing cabinet or a desk drawer. Today, our smartphones are the ultimate repository of our papers. They hold a comprehensive archive of our entire lives. Every email, every text message, every bank transaction, every embarrassing internet search. And beyond what we actively store, there is the data we passively generate. The data brokers. Great. Let's talk about them. These are massive multi-billion-dollar companies that operate largely in the shadows. They harvest our location data, our app usage, our advertiser identification numbers. They build highly sophisticated psychographic profiles of us based on our likes, our reading habits, our purchases, and they sell these profiles on the open market. And importantly, law enforcement agencies are increasingly just buying this data from brokers, completely bypassing the need for a warrant altogether. Exactly. Because if a private company owns the data and is legally willing to sell it to anyone with a credit card, why shouldn't the government be able to just buy it? That is the major legal loophole being exploited right now. So we have this inescapable footprint. From the pacemaker inside your chest, to the smart camera on your street, to the digital shadow living in a server farm. And to illustrate the immense, life-altering power of this footprint within the criminal justice system, Ferguson dissects a truly remarkable case. The murder of Nicole Vanderheiden. Yes. This case perfectly encapsulates the dual nature of this technology. It is a story about how data can both condemn and exonerate with just ruthless efficiency. Let's lay out the timeline for the listener. It is a Friday night. A man named Douglas Daytree and his girlfriend, Nicole Vanderheiden, go out to a local bar to have drinks with friends. Like many couples, they end up getting into an argument. And the argument escalates. It does. They decide to leave the bar separately. Daytree walks back to their shared home. Vanderheiden goes off on her own, and she disappears into the night. And tragically, the next morning, her body is discovered in a field. The police find her blood-stained clothing discarded on a nearby freeway on-ramp. So you are a homicide detective. You arrive at the scene, you establish the victim's identity, and you immediately look at the romantic partner. That is investigative 101. Always the first place you look. And when they look at Daytree, all the traditional circumstantial indicators point squarely at him. They had a documented, public, heated argument just hours before her death.
He is the last person known to have had conflict with her. He is the prime obvious suspect. Right. And historically, without an airtight alibi, a prosecutor might have taken that circumstantial evidence, combined with the obvious motive of a domestic dispute, and secured a conviction. Detry's life was hanging by a thread, but he had a silent digital witness strapped to his wrist. His Fitbit. Yes. Detry wore a Fitbit, an activity tracker that uses an internal accelerometer to record movement and translate it into physical steps. And this device had been actively recording his physical activity throughout the entire night. So the detectives pull the data, and the data tells an irrefutable story. During the precise hours when the medical examiner determined Vander Heiden was brutally murdered, and during the time her body was transported to the field and her clothes discarded on the highway. What did it show? Detry's Fitbit recorded a grand total of 12 steps. 12 steps. 12 steps. He wasn't dragging a body. He wasn't driving a car. He was tossing and turning in his sleep. The biometric data provided a flawless mathematical alibi. It completely exonerated him. But the data didn't just save Detry, it also caught the actual killer. Because the police eventually shifted their focus to another man in the community, George Birch. Birch had actually spoken to detectives previously, and he had voluntarily given them access to a smartphone to help with an entirely unrelated minor hit-and-run investigation. It seemed totally innocuous to him. It did. But by handing over the phone, he unknowingly handed over his Google location history. Right, because Google uses a massive database called Sensor Vault, which collects detailed location records from millions of Android devices. Exactly. And when detectives analyzed Birch's Google location data for the night of the murder, the resulting map was damning. The GPS coordinates placed Birch's phone exactly at the bar where Vander Heiden was last seen. Oh, wow. The data then tracked his movement precisely to the desolate field where her body was discovered. And finally, the data tracked his path to the exact freeway on-ramp where her bloody clothes were dumped. It is stunning, and Birch tried to spin a complex narrative at trial to explain this away, right? He did. He admitted he was there, but he claimed he had consensually met the victim. Yeah. They were intimate, and then Detry, the boyfriend, suddenly showed up with a gun, attacked them, killed her, and forced Birch at gunpoint to move the body. Which is just a desperate attempt to fit a narrative around the immovable facts of the location data. Completely desperate. But the jury saw right through it. They were presented with two conflicting human stories. Birch claimed Detry was there, but the jury had one fixed, immutable, mathematical truth. Detry's Fitbit proved he was asleep. Birch's lies were entirely dismantled by the intersection of his own geolocation data and Detry's biometric data. This case brings up a fascinating legal speculation that Ferguson explores, and it touches on how the courts view the very nature of this data. When we are walking around, shedding all this information, our heart rate, our steps, our location, how does the law conceptualize it? It's a tricky area. It is, because in physical space, we understand the concept of shed DNA. If you go to a diner, drink from a coffee cup, and leave it on the table when you walk out, you have legally abandoned that property and the DNA on it. The police can walk in, bag the cup, and test it without a warrant because you have zero expectation of privacy over garbage left in public. Right, abandoned property. But what about our digital exhaust? When our phones constantly ping cell towers, when we accept the terms of service and give our location data to third-party weather apps, are we legally abandoning that data in the same way we abandon a coffee cup? You've hit on the absolute frontier of Fourth Amendment jurisprudence. It's called the third-party doctrine. Historically, the Supreme Court has ruled that if you voluntarily give information to a third party, like giving your phone numbers to the phone company to connect a call, or giving your financial records to a bank, you lose your reasonable expectation of privacy in that information. The government can subpoena it without a warrant. Which made sense back in the day. Right, but as Ferguson points out, applying a legal doctrine created for 1970s rotary phones to 21st century smartphones is deeply problematic. We aren't really voluntarily giving our location to cell towers. It is a fundamental requirement for the device to function. Right. To say we volunteered the data is like saying we volunteered to leave footprints in the snow. If you want to walk outside, it's unavoidable. But I want to push back on the legal landscape here just a bit, because it isn't an entirely bleak picture. It isn't a total free-for-all for law enforcement. The courts have pushed back. They have in certain areas. You look at a landmark case like Riley v. California, which Ferguson extensively discusses. Right. In that case, police pulled a suspect over for an expired registration, impounded his car,
and found illegal loaded firearms hidden under the hood. They arrested him, and incident to that arrest, they pulled his smartphone out of his pocket and scrolled through it without a warrant, finding evidence of gang affiliation. But the Supreme Court, led by Chief Justice John Roberts, ruled that this was unconstitutional. They said that searching a phone is fundamentally different from searching a physical object. Right. So if the Supreme Court already explicitly recognizes that a phone isn't just a container like a backpack or a wallet, why does Ferguson argue that the law is still lagging so far behind the technology? It's an excellent question, and Riley is indeed a watershed moment for digital privacy. Chief Justice Roberts wrote a brilliant opinion where he essentially said that comparing a modern smartphone to a physical item found in a pocket is like saying a ride on horseback is materially indistinguishable from a flight to the moon. Exactly. A phone contains the sum total of human life photographs, bank records, medical histories, search queries. It reveals more about the inner workings of a person's mind than searching their actual physical house. So the court mandated that police must get a warrant to search the physical device itself. So if the police need a warrant to search the phone, why the alarm? Hasn't the system worked? Because Riley only protects the physical device in your pocket. It doesn't fully resolve the issue of the massive oceans of data held in the cloud or by data brokers or generated by the smart city cameras. I see. And more importantly, as Ferguson argues as we move into part 2 of the book, requiring a piece of paper, a warrant, to access the data is only half the battle. The real issue, the truly existential threat, is what happens to the entire balance of societal power when absolutely everything becomes evidence. And that transition to power dynamics is crucial. This is where Ferguson moves from the what to the why. We've defined the landscape of self-surveillance. Now, what are the consequences of living in it? He breaks these consequences down into 3 distinct categories in chapters 7 through 9. Power problems, privacy problems, and praxis problems. Let's start with the power problems. He makes a really bold claim here. He argues that digital surveillance isn't just an enhanced tool for detectives. It isn't just a better magnifying glass. He argues it categorically alters the very nature of policing itself. He uses a framework he calls the 6 A's to explain the mechanics of this shift. The 6 A's are vital for understanding the mechanical difference between traditional policing and digital policing. Let's walk through them. First is automation. Okay, automation. Traditional policing is inherently limited by human biology. An officer can only stand on one corner watching one street for a limited number of hours before they need to sleep. Digital policing never sleeps. Automated license plate readers, Ring cameras, shot spotter microphones, they are continuously, tirelessly recording the environment 24 hours a day, 7 days a week, without fatigue. The second is acceleration. I think about the old police procedurals on television. If detectives wanted to find a specific paper file or cross-reference a suspect's associates, it took hours, days, or weeks of physical labor, digging through dusty boxes in a basement. Today, because the data is digitized and indexed, querying a massive database of millions of records takes milliseconds. The speed of investigation has accelerated beyond human comprehension. Third is accumulation. Physical evidence rooms have limits. You eventually run out of shelf space for physical files and bloody shirts. But digital storage, powered by massive server farms in the cloud, is incredibly cheap and practically infinite. So they never throw anything away. Exactly. This means police departments are no longer forced to discard old data. They are accumulating decades of behavioral, locational, and relational data on millions of citizens, creating massive, permanent reservoirs of potential evidence. Now wait, let me jump in on the 4th A, aggregation. Because storing all this data physically used to mean it was siloed. Your medical records were at the hospital. Your driving records were at the DMV. Your photos were in a shoebox under your bed. They were isolated. Are you saying that technology fundamentally changes the legal landscape simply because these databases can now talk to each other? Absolutely. Aggregation is perhaps the most powerful tool. Data brokers and modern policing platforms use application programming interfaces, or APIs, to pull disparate data streams into massive data lakes. They use relational databases to connect the dots. They can take your toll records, combine them with your facial recognition scans from a street camera, overlay that with your Amazon purchasing history, and cross-reference it with your known associates based on your social media connections. They aggregate fragmented pieces of your life into a single, comprehensive, highly detailed digital dossier. And the final 2 A's. Accuracy and actualization. The data generated by these systems is often mathematically precise. A GPS coordinate is exact. A biometric scan maps the unique geometry of a face.
And actualization. That means police departments have built the software interfaces required to seamlessly turn these complex data insights into actionable alerts on an officer's dashboard, leading directly to physical arrests. When you look at the mechanics of all 6 of those factors operating simultaneously, you realize he isn't describing an evolution of law enforcement, he's describing a complete paradigm shift. The power of the state has been magnified exponentially. It's a whole new world. But Ferguson points out another, perhaps even more disturbing shift in power. He calls it policing as a platform. The shift of power away from democratic institutions and toward private tech companies. This is a massive structural change. Police departments are traditionally staffed by civil servants trained in law enforcement, not software engineering. They do not know how to build a wide area motion imagery system or a facial recognition algorithm. Right. So they don't build these tools, they buy them. They license them from private, for-profit corporations, companies like Amazon, Palantir, Axon, and Fusus. Explain how a company like Palantir or Fusus actually operates in this space, because I think a lot of people just think of them as selling basic software. It's deeper than that, isn't it? Much deeper. A company like Palantir builds analytical software that ingests massive amounts of structured and unstructured data from various police databases and uses algorithms to identify hidden patterns and connections. Fusus, on the other hand, builds platforms that allow police to tap into privately owned security cameras, like cameras, at a local gas station or on an apartment building, and stream that video directly into a real-time police crime center. So by relying entirely on these proprietary systems, law enforcement becomes functionally dependent on corporate technologists. Exactly. Which means the very architecture of our public safety, how crimes are defined, who is flagged as suspicious, how resources are deployed, is being designed by software engineers in Silicon Valley whose primary fiduciary duty is to maximize profit and establish platform dominance for their shareholders, not necessarily to uphold constitutional rights or ensure equitable justice. The government is essentially outsourcing its coercive power to private actors. And that leads directly into the second consequence Ferguson explores: privacy problems. The core issue here is what he calls the illusion of the search warrant. Let's get into that, because we derive a lot of civic comfort from the idea that the police need to go to a judge and get a warrant before they can read our emails or track our phones. Well, you do. But Ferguson systematically shatters that comfort. How does he shatter it? Because we are taught that the warrant is the ultimate shield against tyranny. It is supposed to be. But Ferguson looks at the mechanical reality of how warrants function today. First, he points out that probable cause, the legal standard required to obtain a warrant, is actually an incredibly low bar. It essentially just means a reasonable belief that a crime has been committed and that evidence will be found in a specific place. Right, it's not beyond a reasonable doubt. Exactly. Second, and more importantly, he looks at the structural competence of the system. The magistrate judges who are tasked with reviewing and signing these highly complex digital warrants are often completely out of their depth technologically. He notes that in some jurisdictions, magistrates aren't even required to have a law degree, let alone a background in computer science. Right. How can a magistrate effectively evaluate a 50-page affidavit requesting a geofence warrant if they don't fundamentally understand how Google's Sensor Vault architecture works? Wait, explain what a geofence warrant actually is for those who might not know. A geofence warrant is a reverse location search. Instead of police saying, "We have a suspect, where is his phone?" they draw a digital fence around a crime scene on a map and tell Google, "Give us the identifying information of every single device that was inside this fence between 2 a.m. and 4 a.m. Wow, so it's a massive dragnet that sweeps up dozens of innocent people just walking by. Precisely. Or a keyword search warrant, where they ask a search engine to identify every person who searched for a specific address or phrase. That's terrifying. It is. When police present these complex requests, they control all the information. The process is entirely ex parte, meaning the subject of the warrant isn't there to defend themselves or argue against it. So Ferguson argues that in this environment, warrants have ceased to function as robust barriers protecting our privacy. They've been reduced to mere administrative keys used to unlock our data. The judge's role becomes almost clerical, rubber-stamping requests they barely comprehend. Which brings us to the most visceral consequences: the praxis problems, the practical, real-world failures of the system. And I want to emphasize that digital systems are often heralded as objective, mathematical, and therefore immune to human error. But Ferguson shows that this is a dangerous fallacy. It's the garbage in, garbage out principle applied to human freedom.
For every shiny success story like the Fitbit murder case we talked about, there are countless hidden failures. Algorithms are only as good as the historical data they are trained on, and historically, policing data has been deeply flawed and racially skewed. So when you feed biased data into a predictive policing algorithm, the algorithm doesn't eliminate the bias, it mathematically launders it. Exactly. It conflates correlation with causation, sending police back to the same over-policed neighborhoods in a self-fulfilling feedback loop. He goes into specific technical failures as well, like facial recognition. We know from extensive research that many facial recognition algorithms have significantly higher error rates when analyzing faces with darker skin tones or the faces of women compared to white men. The algorithms misidentify people of color at alarming rates. And when a computer tells an officer that the man walking down the street is a wanted fugitive with a 98% confidence match, the officer implicitly trusts the machine. They draw their weapon. When the data is wrong, innocent lives are subjected to trauma, false arrest, and potentially lethal force. What Ferguson is doing here is expanding the lens from pure constitutional law to vital sociology. He isn't just analyzing how statutes are interpreted, he is looking at who actually bears the physical and psychological brunt of these surveillance systems on the ground. Right. He highlights how pervasive, inescapable surveillance inherently exacerbates existing structural inequalities. It widens the gap between the affluent and the marginalized. Because the digital net is designed to catch everything. It doesn't surgically extract a single suspect. If police use a geofence warrant or deploy a wide area motion imagery plane, they aren't just targeting the suspect. No, they are targeting everyone that suspect associates with. They are targeting their family members, their neighbors, their co-workers, the people at their place of worship. Innocent people are inextricably caught in the digital dragnet by the very design of the technology. And I think it is crucial to pull this out to a broader historical and political level. Again, maintaining strict impartiality regarding any specific modern political movements. Let's look at the historical reality Ferguson presents. He makes the point that historically, any group fighting for civil rights, organizing labor movements, or protesting government actions relied on a certain degree of anonymity to organize and survive. Absolutely. They would be incredibly vulnerable under today's surveillance architecture. It is a profound, chilling vulnerability. Think about the civil rights movement of the 1960s. Think about labor organizers in the 1920s. They relied on secret meetings, untraceable phone calls from payphones, and anonymous pamphlets. Today, whether you are a journalist uncovering local corruption, a citizen protesting a controversial government policy, or a political dissident challenging the status quo, you leave a massive, indelible digital footprint. Ferguson explicitly states that digital policing is a, quote, godsend for authoritarianism. It provides the ultimate turnkey infrastructure for monitoring and suppressing dissent. Imagine trying to organize a protest against a corrupt regime if every single attendee at a planning meeting could be instantly identified by the geolocation ping of their smartphone. Their faces logged by an automated license plate reader as they drove to the meeting. And their entire network of associations mapped instantly by a relational database algorithm. It creates a profound chilling effect on the very foundations of a democratic society. The freedom of assembly and the freedom of speech are functionally compromised if the state knows exactly who you're assembling with and what you are saying at all times. And as I sit with that, I find myself circling back to the tech company dynamic you brought up earlier regarding Palantir and Fusus. If police departments are increasingly relying on private corporations to provide and maintain this massive surveillance architecture, doesn't that effectively privatize law enforcement? It does. And if law enforcement is privatized, who is actually accountable to the public? Is it the elected city council and the appointed police chief, whom we can theoretically vote out or fire? Or is it a hidden, unelected data engineer in a Silicon Valley corporate park tweaking an algorithm behind an impenetrable wall of corporate secrecy? You've hit on the terrifying accountability void that lies at the heart of this problem. The private companies building these tools aren't subject to the Freedom of Information Act in the same way government agencies are. When defense attorneys or journalists demand to see how a facial recognition algorithm came to a specific conclusion, the companies claim the algorithms are proprietary trade secrets. They refuse to reveal the math. Wow. So the very mechanisms deciding who gets watched, who gets flagged as suspicious, and ultimately who gets arrested are hidden inside a black box. The public is entirely locked out of the process. It feels incredibly bleak, like we have walked willingly, eyes wide open, into a high-tech
panopticon that we now lack the power to dismantle. But I know Ferguson doesn't leave the reader wallowing in despair. A truly great piece of academic work doesn't just diagnose a terminal illness and walk away from the patient. It prescribes a treatment. It offers a blueprint for survival. And that brings us to the final section of his argument in chapters 10 through 12, the responses. How do we fight back when everything is evidence? This is where Ferguson shifts from critique to construction. He provides actionable, systemic solutions across three distinct pillars of society: judicial responses, legislative responses, and individual responses. Let's start with the judiciary. What can the courts do to rein this in? Ferguson argues for a radical shift in perspective from the bench. He says judges need to embrace their inner founding father. They need to cultivate a fierce, revolutionary skepticism about government power. And I absolutely love the historical callback he uses here to illustrate this. He asks the legal community, what would James Otis do? It is a brilliant historical parallel. James Otis was a central, fiery figure in early American legal history. He is most famous for his passionate legal fight in the 1760s against the British use of writs of assistance. These were essentially general warrants blank checks that allowed British customs agents to search any colonist's home anywhere at any time looking for smuggled goods without needing to suspect a specific individual of a specific crime. It was this exact tyrannical abuse of power that infuriated the colonists and directly fueled the creation of the Fourth Amendment. And Ferguson is drawing a direct line from those British writs of assistance to modern technology. He is saying that today's digital dragnets, the geofence warrants that sweep up hundreds of innocent phones in a designated area, or the keyword search warrants, are the exact modern equivalent of those colonial general warrants. Because they're indiscriminate, they lack particularity. Exactly. So judges need to channel that original revolutionary outrage. When the government asks for sweeping, unrestricted access to a database of digital lives, judges need to find the courage to simply say no. But relying entirely on judges to interpret centuries-old laws in the context of rapidly evolving new technologies is incredibly slow. The appellate process takes years. The Supreme Court only takes a handful of cases, which is why Ferguson emphasizes that the Constitution is merely the floor of our rights. It is the bare minimum protection. It is up to our elected legislatures, Congress, state assemblies, city councils to build the statutory ceilings. This is a crucial point. We don't have to wait for 9 justices in Washington to save us. Our elected officials have the power to simply outlaw certain practices tomorrow. And Ferguson proposes a very specific structural framework for this. He calls it the wall. Yes, the wall. A wiretap act like law. This is perhaps his most concrete policy proposal. To understand it, you have to look back to 1968. In 1968, the Supreme Court ruled on the constitutionality of police wiretapping phone lines. But it was Congress that actually stepped in and provided the robust mechanics of protection by passing Title III, the Wiretap Act. Congress created incredibly strict, rigorous statutory rules for when and how the government could intercept phone calls. Let's detail those mechanics, because that is what makes it a good model. Under the Wiretap Act, police can't just get a normal warrant from a local magistrate to tap a phone. Exactly. They have to jump through massive hoops. They have to get authorization from a high-level Department of Justice official before they even ask a judge. They have to prove that normal investigative procedures have been tried and failed. It has to be a last resort. And there are strict time limits. Yes, strict time limits on how long they can listen. And most importantly, there's a requirement for minimization. What does that mean in practice? If they are tapping a mafia boss's phone, and he calls his mother to talk about pasta recipes, the agents have to stop listening and stop recording. They must minimize the intrusion into innocent, non-criminal conversations. So Ferguson is arguing we need a digital equivalent, a modern wall, a statutory ceiling that specifically regulates the collection and use of digital evidence. Right. A law that limits what data the government is allowed to purchase from private data brokers, strictly defines what biometric information they can collect, imposes rigorous minimization requirements on massive data sets, and mandates how quickly innocent data must be deleted. It's a comprehensive regulatory framework for the digital age, treating data exhaust with the same extreme caution and legal reverence that we treated spoken conversations in the 1960s. But laws take time to pass, and political will is often scarce. So what about the individual? What about the person listening to this right now, sitting in their car or their living room? What can they do? Individual responses are the most difficult, but they are necessary for immediate harm reduction.
Ferguson talks about the tedious but vital act of sabotaging the tracking. How so? Going into the labyrinth of your smartphone settings and meticulously revoking location permissions for every app that doesn't strictly need them. Refusing to blindly click "I agree" on massive walls of terms and conditions. Using encrypted messaging apps like Signal. Regularly purging old data and search histories. But I think we have to acknowledge, and Ferguson acknowledges, how incredibly burdensome and frankly unrealistic that is for a normal person to maintain. You can't turn off the GPS in your car without getting hopelessly lost. You can't turn off a smart pacemaker. You can't avoid walking past the Ring doorbell on your neighbor's porch. It is nearly impossible to achieve total digital hygiene while fully participating in society. So Ferguson highlights two other more impactful avenues for individual action. First, how we leverage our economic power. We need to actively reward tech companies that prioritize privacy. Vote with your wallet. Precisely. He gives examples of companies attempting to push back. Apple, for instance, made a highly controversial decision years ago to institute end-to-end encryption on its iPhones by default, meaning even Apple itself does not hold the keys to unlock a user's phone for law enforcement. And Google too, right? Yeah. Google, facing intense pressure, has recently taken steps to alter how location history is stored to intentionally limit their ability to comply with mass geofence warrants. When massive corporations take stands against government overreach or prioritize user privacy over easier data monetization, consumers need to recognize that and support them financially. And the second avenue for individual action. Supporting and funding investigative journalism. This is a critical pillar of his argument. Ferguson names specific reporters who have done monumental, society-altering work exposing the hidden surveillance state. He points to Kashmir Hill at the New York Times. Her work on Clearview AI is legendary. Let's explain what that was, because it shows why journalism matters so much. Clearview AI was a deeply secretive tech startup that did something unprecedented. They wrote a program that scraped billions of publicly available images from the internet, from Facebook, LinkedIn, Venmo, anywhere they could find a face. Billions of images. They took those billions of images and created a massive, entirely unregulated facial recognition app, and they started quietly giving it away to local police departments across the country. And the police loved it, because suddenly they had a magic tool to identify anyone. But there was zero oversight, zero testing for racial bias, and zero public awareness that every citizen's face had been commodified into a police lineup. Kashmir Hill broke that story. She dragged this secretive company into the light. Her reporting essentially halted their unchecked expansion, spurred massive public outcry, and forced congressional hearings and international regulatory action. Ferguson also highlights Jennifer Valentino DeVries, who did incredible investigative work exposing how incredibly mundane, seemingly harmless smartphone apps, like a local weather app or a simple mobile game, were silently embedded with tracking software that harvested precise, real-time location data and sold it to an opaque web of data brokers who then sold it to anyone, including law enforcement. It proves that the press is one of the very last, most effective lines of defense we have. They bring the invisible infrastructure of surveillance capitalism into the light so the public can actually see the trap they are caught in. You can't fight a monster you can't see. Listening to all these individual responses, turning off settings, voting with our wallets, subscribing to newspapers, I can't help but draw an analogy to the environmental movement. For decades, the public has been told to focus on our personal carbon footprint. Right, recycle your plastic. Exactly. We are told to rigorously recycle our plastic bottles, take shorter showers to save water, carpool to work. And while those are objectively good, responsible actions, it often feels like a deliberate attempt to shift the immense burden of saving the planet onto the shoulders of the individual consumer, rather than regulating the massive multinational fossil fuel corporations that are actually producing the vast majority of the global emissions. That's a really sharp comparison. Isn't Ferguson essentially asking us to actively manage and reduce our personal data footprint in the exact same way? And if so, is it really fair, or even practically effective, that the burden is placed on you, the everyday citizen, to fight back against a multi-billion-dollar corporate surveillance machine and a highly funded, technologically advanced law enforcement apparatus? That is an incredibly astute analogy. It perfectly captures the deep exhaustion and frustration of being a modern digital citizen. It feels insurmountable. And you are entirely right, the system is heavily, almost comically, stacked against the individual. Because it's too big. It is.
You can be as careful as possible. You can leave your phone at home. You can turn off your location services. But the automated license plate reader on the highway still logs your car. The street camera still records your face. The credit card company still infers your habits. Individual hygiene is a band-aid on a systemic hemorrhage. So where does that leave us? If personal hygiene isn't enough to stop the bleeding? It leaves us with the stark realization that we desperately need foundational structural reform. We need the wall. We need judicial courage. And because the threat of failing to secure that reform is so utterly catastrophic to the concept of human freedom, Ferguson concludes his book with a profound, deeply chilling thought experiment to guide our political and personal priorities moving forward. Let's walk through this conclusion. It is the perfect distillation of his argument. He calls this concept the tyrant test. The tyrant test requires a fundamental shift in how we view the future and how we construct our laws. Most of us, especially those of us who have the privilege to live relatively comfortable lives and influence policy, operate on a baseline assumption of trust. We trust the system. We trust that our aggregated data will generally be used by well-meaning civil servants to catch dangerous criminals, to improve traffic flow, to make our cities safer and our lives more efficient. And when data breaches happen, or when we read about a police officer abusing a database to stalk an ex-girlfriend, we view those incidents as rare, unfortunate anomalies in an otherwise functional system. But Ferguson warns that building a massive surveillance architecture based on the assumption of continuous benevolent leadership is naive and incredibly dangerous. Exactly. The tyrant test asks you to strip away that optimism and assume the absolute worst. He asks you to imagine a scenario where a genuinely authoritarian leader, someone ruthless and power-hungry, takes control of the government. Or if that feels too abstract, scale it down. Imagine a deeply petty, vindictive, highly corrupt local official, a mayor, a police chief, a local sheriff, gaining absolute unchecked authority over your specific city's data streams. Just visualize that person in your mind. Think of the worst political instincts imaginable. Now, imagine that this leader decides to target a specific subset of the population. Maybe they target people based on a political ideology, a specific physical behavior, a religious affiliation, or a marginalized identity. They declare this group to be an enemy from within, a threat to the state or the community. And they decide to unleash the full, unmitigated power of the law enforcement surveillance apparatus to monitor, harass, audit, and ultimately incarcerate anyone associated with this group. If that targeted group is you, or your family, or your closest friends. Right. Now, looking at that scenario, ask yourself, if that tyrant were in power today, would you want them having access to the digital footprint generated by your smart home? Would you want them having the minute-by-minute biometric vitals from your smartwatch? Would you want them having the historical aggregated location data from your car and your phone, revealing every secret meeting you attended, every doctor you visited, every friend you stayed with over the past 5 years? The answer is obviously, immediately, and horrifyingly no. And that is the entire point of the tyrant test. If you would not want that specific, terrifying person having access to your data, then that data must be completely structurally off limits to everyone right now, today. We have to build the legal walls, the statutory ceilings, and the unbreakable technological encryption before the tyrant arrives, not after. Because once the architecture of surveillance is fully built, once the data exists in a server, and once the legal precedent to access it is firmly established, abstract constitutional theories and grassroots community resistance offer very, very little protection against a determined executive power wielding a digital dragnet. It is a profoundly sobering realization. It strips away the comfort of convenience. We are eagerly, voluntarily building the architecture of a totalitarian state right now in our living rooms and our pockets out of a desire for frictionless convenience and simply hoping, crossing our fingers, that a tyrant never comes along to turn the key and use it against us. And if human history teaches us anything, it is that hope is a notoriously poor strategy for protecting civil liberties. It really is. As we bring this extensive exploration today to a close, I want to leave you, the listener, with a deeply personal thought, a question to mull over long after this audio stops playing. Look around the physical space you are sitting in right now. Look at the devices within arm's reach. Your smartphone resting on the table. The smart speaker on your kitchen counter. The fitness tracker on your wrist. Maybe the camera silently watching your front porch. We have been conditioned by years of brilliant corporate marketing to view these devices as our loyal digital servants. We invite them in.
They are here to make our lives easier, our navigation faster, our bodies healthier, our homes more secure. We view them as extensions of ourselves. We do. But if what Andrew Guthrie Ferguson argues in this book is true, if the legal frameworks don't rapidly change to meet the technology, and if we don't collectively demand a much higher, uncompromising standard of privacy from both our elected officials and our tech companies, you have to ask yourself a very uncomfortable question. Looking at all those blinking lights and glass screens, are you really the master of your smart home? Or are you just its most closely monitored resident? A resident living comfortably in a panopticon of your own making. It has been a truly profound, necessary discussion today. Thank you so much for spending your time with us, for sitting in the quiet and contemplating these massive, invisible shifts happening in our society. It is the most important conversation of our digital age, and it's one we all need to actively participate in. Absolutely. Once again, please check the show notes for the direct link to Andrew Guthrie Ferguson's brilliant and urgent book, Your Data Will Be Used Against You. Until next time, stay curious, stay vigilant, and take care of yourselves out there. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। ল স্কুলের একটা খুব শান্ত ক্লাসরুমের কথা একটু কল্পনা করা যাক। মানে দুপুরের ম্রিয়মান আলো বড় বড় জানালা গলে মেঝের উপর এসে পড়েছে। বেশ সুন্দর একটা দৃশ্যপট। হ্যাঁ, তো ক্লাসের শুরুতে একজন বেশ বয়োজ্যেষ্ঠ প্রফেসর সামনে বসে থাকা ভবিষ্যৎ আইনজীবীদের দিকে তাকিয়ে খুব সাধারণ একটা প্রশ্ন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন গত 1 বছরে ঠিক কতজন মানুষ কোনো অচেনা জায়গায় যাবার জন্য কাগজের তৈরি ম্যাপ বা মানচিত্র ব্যবহার করেছেন। কাগজের ম্যাপ? মানে এখন তো কেউই বোধহয় এটা ব্যবহার করে না। একদম তাই। উজ্জ্বল তরুণ ছাত্রদের ওই দলটিতে স্বাভাবিকভাবেই পিনপতন নীরবতা, একজনও হাত তুলল না। প্রফেসর তখন সামান্য একটু হাসলেন। এরপর নিশ্চয়ই অন্য কোনো প্রযুক্তির কথা জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাঁ, তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইন্টারনেট থেকে ডিরেকশন প্রিন্ট করে বা কাগজে লিখে নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার অভিজ্ঞতা কতজনের আছে। আবারও পুরো ক্লাস সম্পূর্ণ নীরব, কেউ কোনো সাড়া দিল না। এটাও তো আসলে এখন বেশ পুরনো ব্যাপার। ঠিক। এরপর প্রফেসর আসল জায়গাটিতে এলেন। তিনি জানতে চাইলেন দৈনন্দিন চলাফেরায় কতজন নিজেদের স্মার্টফোনের ম্যাপ বা গাড়ির ডিজিটাল ন্যাভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করেন। এবার তো নিশ্চয়ই সবাই হাত তুলেছে। কোনো দ্বিধা ছাড়াই পুরো ক্লাসের সবার হাত একসাথে উপরে উঠে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেতে প্রফেসর অত্যন্ত শান্ত এবং নিচু কণ্ঠে তার শেষ প্রশ্নটি ছুড়ে দিলেন। কি প্রশ্ন ছিল সেটা? তিনি বললেন, এই যে স্মার্টফোন আর গাড়ির ন্যাভিগেশন প্রযুক্তি সবার দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে, কতজন জানেন যে পুলিশ চাইলেই এই একই প্রযুক্তিকে ট্র্যাকিং ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করতে পারে? বাপরে, এটা তো সত্যি একটা চিন্তার বিষয়। হ্যাঁ, মানে শুধুমাত্র একটা ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করে যে কোনো ব্যক্তির মাসের পর মাসের গতিবিধি, তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের নিখুঁত মানচিত্র জেনে নিয়ে তা অপরাধমূলক মামলায় অকাট্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। ক্লাসের অবস্থা তখন কেমন ছিল? ক্লাসরুমের পরিবেশ মুহূর্তে ভারী হয়ে গেল। তরুণ আইন শিক্ষার্থীদের চোখে মুখে এক অদ্ভুত অস্থিরতা। মানে মাত্র 2-1 জন ইতস্তত করে হাত তুলল। এই ছোট্ট গল্পটি আসলে আমাদের এক ভয়ঙ্কর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আরাম আর সুবিধার মোড়কে আমরা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নিজেদের অজান্তেই নিজেদের চারপাশে নজরদারির একটা অদৃশ্য জাল বুনে চলেছি, তাই না? ঠিক তাই, একদম নিশ্ছিদ্র একটা জাল। এই গল্পটি চমৎকারভাবে একটা নীরব আত্মসমর্পণের চিত্র তুলে ধরে। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে মানুষের এই সম্পর্কটি মূলত এক ধরনের একতরফা চুক্তি। মানে যেখানে প্রতিদিন আমরা আমাদের অত্যন্ত সংবেদনশীল ডেটা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, প্রতিদিন একটু একটু করে অত্যন্ত ব্যক্তিগত ডেটা প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই বিপুল পরিমাণ ডেটাই একসময় আইনি কাঠামোর ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হওয়ার একটা রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছে। আর আজকের এই নিবিড় আলোচনাটা তো এই বিষয়ের ওপরই একটা অসাধারণ বইকে ঘিরে। একদম ঠিক।
আজকের আলোচনাটি মূলত অ্যান্ড্রু গাথ্রি ফের্গুসনের লেখা একটা চমৎকার বই, ইয়োর ডেটা উইল বি ইউজড অ্যাগেনস্ট ইউ, পুলিশিং ইন দি এজ অফ সেলফ সার্ভেইলেন্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি। বিশেষ করে যারা নতুন গবেষক, সবেমাত্র একাডেমিক গবেষণার জগতে পা রাখছেন বা কোনো জটিল বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য আজকের এই বিশ্লেষণটি অত্যন্ত আপন এবং শান্ত একটা যাত্রার মতো হবে। লেখক অ্যান্ড্রু গাথ্রি ফের্গুসন তো জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুলের আইনের একজন অত্যন্ত সম্মানিত অধ্যাপক, তাই না? হ্যাঁ, নতুন নজরদারি প্রযুক্তি, আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থা এবং অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি প্রথম সারির একজন জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ। উনি তো একটা অ্যাওয়ার্ড জেতা বইও লিখেছিলেন এর আগে। ঠিক বলেছেন। 2018 সালে তিনি প্রোজ অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী দ্য রাইজ অফ বিগ ডেটা পুলিশিং বইটি রচনা করেন। তাছাড়া তিনি সম্মানজনক আমেরিকান ল ইনস্টিটিউটের একজন নির্বাচিত সদস্য। তার লেখার ধরন, গবেষণার গভীরতা এবং শুষ্ক আইনি তত্ত্বের সাথে রক্তমাংসের মানুষের জীবনের গল্পকে মিলিয়ে দেওয়ার যে ক্ষমতা, সেটা যে কোনো নতুন গবেষকের জন্য একটা আদর্শ পাঠ হতে পারে। হ্যাঁ, তবে বইটির মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে এই যে বিপুল পরিমাণ ডেটা জমা হওয়ার কথা বলা হলো, সেখান থেকে একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন। ডেটা সেন্টারের বিষয়টা বলছেন তো? হ্যাঁ, মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য বা ট্র্যাকিং ডেটা তো আর বাতাসে ভেসে থাকে না, এগুলো জমা হয় বিশাল বিশাল সব ডেটা সেন্টারে। আর মজার ব্যাপার হলো, আমাদের এই নিয়মিত আয়োজনের নেপথ্যেও রয়েছে এক ধরনের পরিবেশগত চিন্তাভাবনা। মানে আমাদের সম্প্রচারের যে নতুন সময়সূচি, সেটা একদম। মার্চ 2026 থেকে আমাদের এই আয়োজনটি প্রতি রবিবার এবং সোমবার সম্প্রচারিত হচ্ছে। প্রতি রবিবারে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কোনো ক্লাসিক গবেষণাপত্র বা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের রিভিউ করা হচ্ছে। আর সোমবারে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের একেবারে সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ থাকছে। যারা নিয়মিত এই আয়োজনের সাথে যুক্ত আছেন, তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চালিত অডিও বিশ্লেষণগুলো পরিবেশের ওপর বেশ বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। হ্যাঁ, বিশেষ করে ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলোতে তো এসব ভারী প্রসেসিংয়ের জন্য বিপুল পরিমাণে পানি এবং বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ঠিক, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার এই বৈশ্বিক উদ্যোগে সামান্য হলেও অবদান রাখতে এবং একই সাথে এই জ্ঞানভিত্তিক আলোচনার গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখতেই সাপ্তাহিক রিলিজের এই সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা আনা হয়েছে। এটা আসলেই খুব দরকারি একটা উদ্যোগ। হ্যাঁ, আর যারা শুনছেন তারাই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, অত্যন্ত সময় উপযোগী এবং চিন্তা জাগানিয়া এই বইটি পড়ার জন্য কিছুটা সময় বের করা যেতে পারে। বইটির লিঙ্ক শো নোটে যুক্ত করা আছে। আচ্ছা, এবার মূল কথায় আসা যাক। পকেটের স্মার্টফোন বা গাড়ির জিপিএস তো বাইরের পৃথিবীর গল্প। যদি আমাদের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল, মানে আমাদের নিজেদের ঘরের দিকে একটু নজর দেয়া যায়, তাহলে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে। এটা ভাবলেই তো গায়ে কাঁটা দেয়। মানুষের নিজেদের ঘর, যা শত শত বছর ধরে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সবচেয়ে বড় দুর্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, সেটাই এখন ডিজিটাল প্রমাণের সবচেয়ে বড় উৎসে পরিণত হয়েছে। একদম তাই। এটি বইয়ের একেবারে শুরুর দিকের আলোচনার বিষয়। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের আরাম এবং নিরাপত্তার কথা বলে যে স্মার্ট ডিভাইসগুলো ঘরের ভেতরে স্থাপন করছে, সেগুলোই মূলত 24 ঘন্টা সজাগ থাকা গুপ্তচরের মতো কাজ করছে, তাই না? হ্যাঁ, নতুন গবেষকদের জন্য এখানে লেখকের পদ্ধতিটি লক্ষ্য করার মতো। তিনি কিন্তু কোনো শুষ্ক তাত্ত্বিক আলোচনা দিয়ে বইটা শুরু করেননি। উনি একটা খুব মর্মান্তিক ঘটনা দিয়ে শুরু করেছেন, সিলভিয়া গালভার ঘটনা। ঠিক, ফ্লোরিডায় সিলভিয়া নামের এক নারী তার নিজের ঘরের ভেতরেই একটা বর্ষার আঘাতে মারা যান। ঘরে তখন তার বয়ফ্রেন্ড ছাড়া আর কোনো মানুষ ছিল না। বয়ফ্রেন্ড তো দাবি করেছিল যে এটা একটা নিছক দুর্ঘটনা ছিল। হ্যাঁ, দৃশ্যত ঘরে তো কোনো সাক্ষী ছিল না, কিন্তু পুলিশের নজরে পড়ে ঘরের এক কোণে রাখা অ্যামাজন একো ডট বা অ্যালেক্সা ডিভাইসটি। ও, মানে ওই স্মার্ট স্পিকারটা। হ্যাঁ, পুলিশ এবং বিবাদী পক্ষ উভয়ে বুঝতে পারে যে এই ডিভাইসটি সবসময় শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে। এটি নির্দিষ্ট ডাক বা ওয়েক ওয়ার্ড শোনার অপেক্ষায় অডিও বাফার করতে থাকে। আর অনেক সময় ভুলবশত চালু হয়ে ঘরের ভেতরের কথাবার্তা রেকর্ড করে অ্যামাজনের ক্লাউড সার্ভারে পাঠিয়ে দেয়। ঠিক তাই। সেই রাতের অডিও রেকর্ডিংকে সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য রীতিমতো আদালত একটা বড় আইনি লড়াই শুরু হয়।
এই ঘটনাটির সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি হলো আমাদের ঘরের দেয়ালগুলো আক্ষরিক অর্থেই এখন কান পেতে থাকছে। মানে ব্যাপারটা তো আর শুধু শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। না, শুধু শোনা নয়, বইতে রিকার্ডো মুসেলিনোর আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। হ্যাঁ, যে ঘটনাটা প্রমাণ করে যে ঘরের দেয়ালগুলোর এখন চোখও গজিয়েছে। ম্যারিল্যান্ডের একটা শান্ত পাড়ায় এক রাতে 5 রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। রিকার্ডোর স্ত্রীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় সেখানে। স্বাভাবিক তদন্তের অংশ হিসেবে পুলিশ রিকার্ডোকে সন্দেহ করছিল, কিন্তু আসল অকাট্য প্রমাণটি কোনো মানুষের কাছ থেকে আসেনি। প্রমাণটা এসেছিল তাদের ঘরের গুগল নেস্ট ক্যামেরা থেকে, তাই না? একদম। এই স্মার্ট ক্যামেরাগুলো তো শুধু লোকাল মেমোরিতে ভিডিও সেভ করে না, এগুলো সরাসরি ক্লাউডে ডেটা পাঠিয়ে দেয়। হ্যাঁ, আর পুলিশের উদ্ধার করা সেই হাই ডেফিনিশন ভিডিওতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায় কিভাবে রিকার্ডো গভীর রাতে কুকুরকে বাইরে বের করে, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পানি খায় এবং তারপর বেডরুমে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় স্ত্রীকে খুন করে। এই যে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো মানুষকে সুরক্ষার নামে এক ধরনের সেবা বিক্রি করছে, লেখক এখানে চমৎকার একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন, সার্ভেলেন্স অ্যাজ এ সার্ভিস বা #ডিস্টোপিয়া প্রাইম। ঠিক তো? হ্যাঁ, #ডিস্টোপিয়া প্রাইম। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম মনে হচ্ছে যে ঘরের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য অত্যন্ত সুদক্ষ একজন দারোয়ান নিয়োগ দেওয়া হলো। সে বাইরের চোর ডাকাত থেকে ঘরকে রক্ষা করছে ঠিকই, কিন্তু দিন শেষে ঘরের ভেতরের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া, ব্যক্তিগত আলোচনা, প্রতিটি একান্ত মুহূর্তের গল্প পুলিশের খাতায় নিখুঁতভাবে লিখে দিয়ে আসছে। দারোয়ান নিয়োগের এই উপমাটি পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে খুব নিখুঁতভাবে তুলে ধরে, কারণ এই দারোয়ান কখনো ঘুমায় না এবং এর স্মৃতিশক্তি অসীম। হ্যাঁ, আর এই ডেটা তো কখনো মুছেও যায় না সহজে। ঠিক বলেছেন। যারা গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য এখানে শেখার অনেক কিছু রয়েছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে লেখক তার মূল আইনি তত্ত্বে যাওয়ার আগে কিভাবে চরম এবং অকাট্য বাস্তব ঘটনার উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। হ্যাঁ, একটা খুব শক্তিশালী প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন তিনি। একটা ভালো গবেষণাপত্র কিন্তু শুধুমাত্র কিছু ডেটা বা থিওরির সমষ্টি নয়, বাস্তব জীবনের প্রভাব বা ইম্প্যাক্ট দেখাতে পারলে সেটা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। মানে সিলভিয়া বা রিকার্ডোর মতো মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর পেছনের অদৃশ্য প্রযুক্তিগত মেকানিজম ব্যাখ্যা করতে পারলে গবেষণাটা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি আবেদনময় হয়ে ওঠে। বাস্তব ঘটনাগুলো আসলেই যে কোনো গবেষণাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এখন ভাবার বিষয় হলো, ঘরের দেওয়ালের ভেতরের অবস্থায় যদি এই হয়, তবে ঘরের বাইরের সাধারণ জিনিসপত্র বা আমাদের শরীরের কি অবস্থা? কারণ মানুষ তো আর সারাদিন ঘরের ভেতর বন্দি থাকে না। একদম। মানুষ বাইরে যায়, নানা জিনিসপত্র ব্যবহার করে, বিভিন্ন প্রযুক্তি শরীরে ধারণ করে ঘোরে। ঠিক এই জায়গাটিতে লেখক একটি অত্যন্ত যুগান্তকারী এবং নতুন শব্দের অবতারণা করেছেন। শব্দটি হলো সেন্সারভেইলেন্স। সেন্সারভেইলেন্স মানে সেন্সর আর সার্ভিলেন্সের একটা সংমিশ্রণ। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। বর্তমান পৃথিবী শুধুমাত্র বোকা বস্তুর পৃথিবী নয়, এটি স্মার্ট সেন্সরের পৃথিবী। আমাদের ব্যবহৃত গাড়ির জিপিএস সিস্টেম, স্মার্ট টেলিভিশন বা স্মার্ট ওয়াচের কথা বলছেন তো? হ্যাঁ, এমনকি রাস্তায় পড়ে থাকা একটি ভাড়ায় চালিত ই-বাইকও প্রতিনিয়ত ডেটা তৈরি করছে। একটা ই-বাইক ব্যবহার করার সময় তার ট্র্যাকিং ডেটা মুহূর্তের মধ্যে একটা নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করে ফেলে। মানে জিপিএস কোঅর্ডিনেট, গতি এবং গন্তব্যের সব ডেটা। হ্যাঁ, কোনো মানুষ কখন, কোথায়, ঠিক কতক্ষণ অবস্থান করেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রেকর্ড তৈরি হয়ে যাচ্ছে ক্লাউড সার্ভারে। আর মানুষের শরীর কিভাবে ডেটা উৎপন্ন করার যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে এবং সেটি কিভাবে আদালতে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা তো রীতিমতো বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর মতো শোনায়। রস কম্পলটনের ঘটনাটির কথা এখানে বলা যেতে পারে। হ্যাঁ, তার নিজের বাড়িতে ভয়াবহ আগুন লাগে। সে পুলিশকে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে জানায় যে সে জীবন বাঁচাতে দৌড়াদৌড়ি করছিল। সে বলেছিল যে নিজের কিছু প্রিয় জিনিসপত্র জানালার কাঁচ ভেঙে বাইরে ফেলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার বুকে বসানো ছিল একটা স্মার্ট পেসমেকার। একজন কার্ডিওলজিস্ট বা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ যখন পুলিশের অনুরোধে সেই পেসমেকারের ডেটা বিশ্লেষণ করেন, তখন আসল সত্য বেরিয়ে আসে। ডেটায় তো ধরা পড়ে যায় যে সে আসলে কিছুই করছিল না। একদম। অগ্নিকাণ্ডের ওই নির্দিষ্ট সময়ে তার হার্টবিট বা হৃদস্পন্দন, কার্ডিয়াক রিদম কোনো কিছুতেই সেরকম কোনো শারীরিক পরিশ্রম বা মানসিক চাপের লক্ষণ ছিল না। শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে পুরো ব্যাপারটি ছিল মূলত ইন্স্যুরেন্স জালিয়াতির একটা চেষ্টা। মানে নিজের বাড়িতেই নিজে আগুন লাগানোর ঘটনা, মানুষের নিজের হৃৎপিণ্ডই নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে বসল।
এটা আসলেই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আবার এর ঠিক বিপরীত ঘটনাও কিন্তু ঘটে। যেখানে এই সেন্সর ডেটা একজন মানুষকে নিশ্চিত শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। হ্যাঁ, ডগলাস ডেট্রির ঘটনাটি এর একটি দর প্রমাণ। তার গার্লফ্রেন্ড যখন খুন হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে পুলিশ তাকে প্রধান সন্দেহভাজন হিসাবে ধরে নেয়। এবং সে তো প্রায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পথেই ছিল। ঠিক, কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে দেয় তার হাতের স্মার্ট পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি, মানে তার ফিটবিট। পুলিশ যখন ফিটবিটের ক্লাউড ডেটা বিশ্লেষণ করে তখন তারা কি দেখতে পায়? তারা দেখে যে খুনের আনুমানিক সময়টিতে ডগলাসের শরীর থেকে মাত্র 12টি স্টেপ বা পদক্ষেপের ডেটা রেকর্ড হয়েছে। ও, মানে একজন মানুষ খুন করার মতো যে শারীরিক মুভমেন্ট প্রয়োজন তার কোনো লক্ষণই সেই ডেটায় ছিল না। একদম না, সে মূলত সেই সময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। এই ছোট্ট একটা হার্ডওয়্যারের ডেটাই তাকে শেষ পর্যন্ত নির্দোষ প্রমাণ করতে সাহায্য করে। কিন্তু এখানেই একটা বড় ধরনের দার্শনিক এবং যৌক্তিক সংশয় তৈরি হয়। কি রকম সংশয়? এই যে ডেটাগুলো, এগুলো কি সত্যিই মানুষের জীবনের সম্পূর্ণ অবিকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারে, নাকি এটি মানুষকে নিছক কিছু ডেটা পয়েন্টের সমষ্টি বা কোয়ান্টিফাইড সেলফ বানিয়ে ফেলে, যেখানে মানুষের আবেগ, ভয় বা মনস্তত্ত্বের কোনো স্থান নেই? হ্যাঁ, ধরুন একটা পেসমেকার হয়তো হার্টবিট বা হৃদস্পন্দনের ওঠানামা মাপতে পারে, কিন্তু ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় একজন মানুষের মনের ভেতরের যে বিভ্রান্তি, ভয় বা প্যানিক তৈরি হয় সেটাকে শুধু সেন্সর দিয়ে মাপা সম্ভব? এটা খুবই চমৎকার একটা প্রশ্ন। এই ডেটার উপর বিচার ব্যবস্থার এই অন্ধ বিশ্বাস কি শেষ পর্যন্ত পুরো আইনি প্রক্রিয়াকে এক ধরনের যান্ত্রিক রূপ দিচ্ছে না? এটি অত্যন্ত গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যবেক্ষণ। ডেটা বা তথ্য কখনোই তার পেছনের সম্পূর্ণ কনটেক্সট বা প্রেক্ষাপট বুঝতে পারে না। ডেটা শুধু সংখ্যা চেনে, মানুষের আবেগ চেনে না। আর ঠিক এই জায়গাতেই বোধহয় একজন দক্ষ গবেষকের মুনশিয়ানা লুকিয়ে থাকে, তাই না? একদম ঠিক। লেখক এখানে শুধু একটা নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ভালো বা খারাপ দিক নিয়ে পড়ে থাকেননি। তিনি স্মার্ট হোম, আধুনিক গাড়ি, পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি, এই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ডোমেন থেকে তথ্য সমন্বয় করেছেন। আলাদা আলাদা ফিল্ডে ডেটাগুলোকে এক সুতোয় গেঁথে তিনি একটা বৃহত্তর সিস্টেমিক বা কাঠামোগত সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। হ্যাঁ, গবেষণায় কিভাবে বিভিন্ন দিক থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র দাঁড় করাতে হয় তার একটা চমৎকার উদাহরণ হলো এই সেন্সরভেলেন্সের ধারণা। তাহলে একটা বড় প্রশ্ন সামনে চলে আসে, প্রযুক্তি যেহেতু এতটা গভীরে প্রবেশ করেছে, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তাহলে আমাদের আইন ব্যবস্থা কেন ব্যক্তিগত তথ্যের এই সুরক্ষা দিতে পারছে না? এই জায়গাটাতেই বইয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের মূল আইনি তর্কটা শুরু হয়। মানে কনসিকুয়েন্সেস আর রেসপন্স নিয়ে যে আলোচনাটা আছে, এটা দেখলে তো মনে হয় যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সেকেলে আইন দিয়ে 21 শতাব্দীর এই রকেটের গতির প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে। ব্যাপারটা অনেকটা তাই। এটা অনেকটা মহাকাশযান চালানোর ক্ষেত্রে পুরনো আমলের জলদস্যু দমনের আইন প্রয়োগ করার চেষ্টার মতো অবাস্তব আর অকেজো একটা ব্যাপার। উপমাটি খুবই নিখুঁত। আইন আসলে এক্ষেত্রে অনেকটাই অসহায়, কারণ আইনগুলো তৈরি হয়েছিল সম্পূর্ণ অ্যানালগ যুগের চিন্তাভাবনা থেকে, যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলতে বোঝাতো তার বাড়িঘরের 4 দেয়াল বা তার ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, তাই না? হ্যাঁ, আমেরিকার সংবিধানে বিশেষ করে 4th অ্যামেন্ডমেন্ট বা 4র্থ সংশোধনীতে বলা আছে যে পুলিশ বিনা কারণে বা সুনির্দিষ্ট ওয়ারেন্ট ছাড়া কারো বাড়িতে অযৌক্তিক তল্লাশি চালাতে পারবে না। কিন্তু ডিজিটাল ডেটার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তো সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। লেখক তো অত্যন্ত জোর দিয়ে একটা কথা বলেছেন, ডিজিটাল ইজ ডিফারেন্ট। একদম ঠিক, ডিজিটাল বিষয়টি মৌলিকভাবেই আলাদা। এই আলাদা হওয়ার বিষয়টি সম্ভবত ডিজিটাল রামেজিং বা ডিজিটাল তল্লাশির ধারণার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। হ্যাঁ, ডিজিটাল রামেজিং বিষয়টা একটু খুলে বলা দরকার। পুরনো দিনে পুলিশ কারো ঘরে কিছু খুঁজতে গেলে নির্দিষ্ট একটা জিনিস খুঁজত, ড্রয়ার খুলত, কাগজ দেখত। কিন্তু এখন পুলিশ যখন ডিজিটাল ওয়ারেন্ট নিয়ে আসে তখন তারা হয়তো শুধু একটা খুনের রাতের মেসেজ দেখতে চাইল। কিন্তু স্মার্টফোনটি আনলক করার পর তারা ওই ব্যক্তির গত 5 বছরের ব্যক্তিগত ছবি, হেলথ ডেটা, ইন্টারনেট সার্চ হিস্ট্রি সব কিছুর অ্যাক্সেস পেয়ে যায়। হ্যাঁ, লোকেশন থেকে শুরু করে সবকিছুই অবাধে ঘাটাঘাটি করার সুযোগ পেয়ে যায় তারা। সংবিধানে তো কোনোভাবেই এই ধরনের অবাধ এবং অপ্রাসঙ্গিক তল্লাশির
তল্লাশির অনুমতি দেওয়ার কথা ছিল না? একদম ঠিক জায়গাটি ধরেছেন। ডিজিটাল তল্লাশি পুলিশকে এমন সব তথ্য দেখার সুযোগ করে দেয় যা হয়তো মূল মামলার সাথে মোটেও প্রাসঙ্গিক নয়। এটি এক ধরনের মারাত্মক আইনি শূন্যতা। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে অত্যন্ত বিতর্কিত একটা আইনি তত্ত্ব, যাকে বলা হয় থার্ড পার্টি ডকট্রিন। হ্যাঁ, 70 বা 80-র দশকে যখন এই আইনের ধারণাটি তৈরি হয়, তখন এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংক বা টেলিফোন কোম্পানির রেকর্ড। যুক্তিটি ছিল, যখন কেউ স্বেচ্ছায় তৃতীয় কোনো পক্ষকে বা থার্ড পার্টিকে নিজের তথ্য দিয়ে দেয়, তখন সে আইনত তার গোপনীয়তার অধিকার নিজেই ছেড়ে দেয়। কিন্তু সেই যুগের ব্যাংকের কাগজপত্রের সাথে বর্তমান যুগের ক্লাউড স্টোরেজের কোনো তুলনাই চলে না। একদমই চলে না। আমরা তো প্রতিনিয়ত প্রতি সেকেন্ডে গুগল, অ্যামাজন বা অ্যাপলকে আমাদের জীবনের সমস্ত ডেটা দিয়ে দিচ্ছি। আর থার্ড পার্টি ডক্ট্রিন অনুযায়ী আইনি দৃষ্টিতে আমরা আমাদের গোপনীয়তার অধিকার নিজেরাই স্বেচ্ছা বিলিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু কোম্পানিগুলোর কাছে ডেটা আছে, পুলিশের আর ওই ব্যক্তির কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ছে না। ঠিক, তারা সরাসরি কর্পোরেট কোম্পানির সার্ভার থেকেই তথ্য নিয়ে নিতে পারছে। এটি এমন এক ফাঁদ যা থেকে বেরোনোর কোনো উপায় এই পুরনো আইনে নেই। এই পুরনো আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতাগুলো আসলে পরিস্থিতিকে কতটা ভয়াবহ করে তুলেছে তা সত্যি ভাবার বিষয়। হ্যাঁ, আর একটা ভালো গবেষণাপত্র কিভাবে তৈরি হয় তা সম্ভবত এই অংশ থেকে সবচেয়ে ভালোভাবে শেখা যায়। শুধু সমস্যার কথা বলে বা হায় হুতাশ করে গিয়ে তো একটা ভালো গবেষণা থেমে থাকে না। বিদ্যমান আইনের দুর্বলতাগুলো উদ্ঘাটন করা এবং সেখান থেকে উত্তরণের পথ খোঁজাটাই তো একজন গবেষকের মূল কাজ হওয়া উচিত। একদম তাই। তো এই যে আদালত বর্তমান আইন দিয়ে মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হিমশিম খাচ্ছে, এই সম্ভাব্য অপব্যবহার থেকে ভবিষ্যৎ সমাজকে কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব? বইটিতে কি এর কোনো বাস্তবসম্মত সমাধানের কথা বলা হয়েছে? হ্যাঁ, সেটাই জানতে চাইছিলাম। বইয়ের উপসংহারে কি কোনো কাঠামোগত সমাধানের কথা আছে? হ্যাঁ, বইয়ের একেবারে শেষের দিকে লেখক একটা অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক ধারণার কথা বলেছেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে দ্য টায়ারেন্ট টেস্ট বা স্বৈরশাসক পরীক্ষা। স্বৈরশাসক পরীক্ষা নামটা তো বেশ ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ, লেখক বলছেন আইন বা প্রযুক্তি তৈরির সময় আমাদের সবসময় ভবিষ্যতের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিটি কল্পনা করতে হবে। মানে বর্তমানের গণতান্ত্রিক সরকার বা ভালো মানুষের হাতে এই ডেটা হয়তো নিরাপদ মনে হতে পারে। কিন্তু একবার ভাবুন, যদি কোনো স্বৈরশাসক বা চরম প্রতিহিংসা পরায়ণ কোনো সরকার ভবিষ্যতে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ নেয়, তখন কি হবে? বুঝতে পারছি। তারা যদি রাতারাতি এই সমস্ত স্মার্ট ডিভাইস ও ক্লাউড সার্ভারের ডেটার অ্যাক্সেস পেয়ে যায়, তখন নিজেকে রক্ষা করার জন্য মানুষের কী ধরনের আইনি কাঠামো প্রয়োজন হবে? ঠিক এটাই, টাইরেন্ট টেস্ট। সেই সম্ভাব্য স্বৈরশাসক খুব সহজেই মানুষের রাজনৈতিক মতাদর্শ, লোকেশন হিস্ট্রি, কে কোন প্রতিবাদ সমাবেশে গিয়েছিল সব জেনে যাবে। বা কে কোন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিল, এই সব ডেটার ওপর ভিত্তি করে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মানুষকে টার্গেট করতে পারবে। কারণ নজরদারির পুরো কাঠামোটি তো আমরা নিজেরাই নিজেদের পয়সা খরচ করে আগেই তৈরি করে রেখেছি। পুরনো যুগের টেলিফোনে আড়ি পাতার ক্ষেত্রে যেমন অত্যন্ত কঠিন শর্ত মানতে হতো, যাকে বলা হতো টাইটেল 3 বা ওয়াইড ট্যাপ আইন, সেরকম কিছুর প্রয়োগের কথাই হয়তো এখানে বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, তখন পুলিশ চাইলে সহজে আড়ি পাততে পারত না, অনেক স্তরের অনুমতি লাগত। বর্তমানের এই আইওটি বা ইন্টারনেট অফ থিংসের যুগেও হয়তো সেরকম শক্ত আইনি দেয়াল বা বাধার প্রয়োজন। ঠিক তাই, লেখক একে বলেছেন ওয়ালে ওয়ার্ড্রপ অ্যাক্ট লাইক ল, মানে ডিজিটাল ডেটা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সাধারণ ওয়ারেন্টের চেয়ে অনেক বেশি কড়া আইনি দেয়াল থাকতে হবে। যে কোনো ডেটা চাইলেই যেন পুলিশ বা সরকার না নিতে পারে, তার জন্য কঠোর শর্ত আরোপ করতে হবে। আর এর পাশাপাশি তিনি সবচেয়ে বড় জোর দিয়েছেন সাধারণ নাগরিকের সচেতনতার উপর। ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে যারা সম্মান করে এমন রাজনীতিবিদদের ভোট দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। মানে আইন প্রণয়নের সময় যারা এই ডেটা সুরক্ষার বিষয়গুলোকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রাধান্য দেয়, তাদের আইনসভায় পাঠাতে হবে। একদম। কিন্তু এখানেই একটা বড় ধরনের সংশয় তৈরি হয়। এই যে আইনি দেয়াল তৈরি করা বা ভোট দেওয়ার মতো সমাধানগুলোর কথা বলা হচ্ছে, এগুলো কি এখন আর সত্যি কাজে আসবে? কেন মনে হচ্ছে কাজে আসবে না? মানে একটুখানি আরাম আর সুবিধার লোভে মানুষ তো ইতোমধ্যেই নিজেদের সমস্ত গোপনীয়তা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ডেটা টেক কোম্পানিগুলোর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। হ্যাঁ, বিশাল পরিমাণ ডেটা তো ইতোমধ্যেই সার্ভারে জমা হয়ে আছে। এখন কি আর এই স্রোতকে উল্টো দিকে ঘোরানো সম্ভব? আমরা তো অনেক দেরি করে ফেলেছি। এই সংশয়টি একেবারেই অমূলক নয়।
মানুষ আসলেই এক ধরনের ডিজিটাল জালের ভেতরে আটকে পড়েছে। কিন্তু একজন গবেষকের কাজ হলো অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আশার আলো দেখানো। মানে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। ঠিক। গবেষণার শেষ ধাপে কিভাবে একটা সুনির্দিষ্ট এবং কাঠামোগত সমাধান উপস্থাপন করতে হয় যা সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে, তা এই দ্য টাইরেন্ট টেস্টের ধারণা থেকে শেখা যায়। হয়তো রাতারাতি অতীত পরিবর্তন করা যাবে না বা সমস্ত ডেটা মুছে ফেলা সম্ভব হবে না, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য একটা আইনি ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামো দাঁড় করানো এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। তা না হলে এই নজরদারির কোনো সীমারেখা থাকবে না। গবেষকদের জন্য এটা আসলেই একটা বড় শিক্ষা। কিভাবে হতাশার মাঝেও যুক্তিসঙ্গত আর কাঠামোগত সমাধানের পথ দেখাতে হয়, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্তত একটা আইনি ঢাল ব্যবহার করতে পারে। একদম তাই। আজকের এই সুদীর্ঘ, শান্ত এবং নিবিড় আলোচনার পর পুরো বিষয়টি যদি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তবে মূল সুরটি কিন্তু একটাই। সেটা কি? প্রযুক্তির আরাম, নিরাপত্তা এবং সুবিধার মোড়কে মানুষ মূলত নিজেদের অজান্তেই নিজেদের চারপাশে একটা নিশ্ছিদ্র ডিজিটাল জেলের দেয়াল তুলে চলেছে। হ্যাঁ, যে স্মার্ট এসি ঘরে পৌঁছানোর আগেই ঘর ঠান্ডা করে রাখছে, বা যে আধুনিক ক্যামেরা দরজায় দাঁড়িয়ে 24 ঘন্টা পাহারা দিচ্ছে, তারাই আসলে মানুষের জীবনের প্রতিটি সেকেন্ডের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট অত্যন্ত যত্ন করে সার্ভারে জমিয়ে রাখছে। সবাই ভাবছে তারা প্রযুক্তির ক্রেতা, কিন্তু আসলে এই কাঠামোর ভেতরে মানুষের ডেটাই সবচেয়ে বড় পণ্য। আর এই পণ্যটি যে কোনো সময় শুধুমাত্র একটি মাত্র কাগজের টুকরো বা আইনি ওয়ারেন্টের মাধ্যমে আমাদের বিরুদ্ধেই চরম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঠিক। আলোচনার শেষে একটা বিষয় খুব জোরালোভাবে ভাবনার উদ্রেক করে। সেটা কি? কাল্পনিক কোনো চোর ডাকাত বা বাইরের বিপদের হাত থেকে বাঁচতে আমরা নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করে ঘরের চারদিকে অসংখ্য স্মার্ট সেন্সর আর ক্যামেরা লাগাচ্ছি। হ্যাঁ, নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু এই ব্যক্তিগত সুরক্ষার যে অন্ধ আকাঙ্ক্ষা, তা কি আসলে এমন একটি চূড়ান্ত নজরদারি ব্যবস্থা বা প্যানোপটিকন তৈরি করছে না, যা ভবিষ্যতে কোনো সম্ভাব্য স্বৈরশাসকের সবচেয়ে বড় এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্রে পরিণত হতে পারে? এটা সত্যি একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা। সুরক্ষার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই কি শেষ পর্যন্ত মানুষের সাংবিধানিক স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াবে? এটি আসলেই গভীরভাবে চিন্তা করার মতো একটা প্রশ্ন। বর্তমান সময়ের প্রতিটি মানুষকে এই বিষয়টা ভাবিয়ে তোলা উচিত। একদম। আজকের মতো আমাদের এই শান্ত এবং নিবিড় আলোচনা এখানেই শেষ হচ্ছে। আগামীতে নতুন কোনো গবেষণার গল্প, নতুন কোনো চিন্তার খোরাক নিয়ে আবারও কথা হবে। প্রযুক্তির এই যুগে প্রত্যেকে নিজের মতো করে সুরক্ষিত থাকবেন এবং ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए, एक रात एक घर में भयंकर आग लग जाती है। भयंकर आग? हाँ, घर का मालिक किसी तरह पुलिस के पास पहुंचता है। वो हाफते हुए कहानी बताता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी अपना कुछ कीमती सामान एक सूटकेस में भरा और बस आग की लपटों के बीच से भागकर बाहर आ गया। मतलब कहानी तो बिल्कुल सच लगती है ना? कोई कारण नहीं था उस पर शक करने का। बिल्कुल नहीं, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अजीब लगता है और फिर उन्हें एक ऐसा गवाह मिलता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, कौन सा गवाह? उस आदमी का अपना स्मार्ट पेसमेकर। बाप रे, स्मार्ट पेसमेकर? हाँ, और उस पेसमेकर के बायोमेट्रिक डेटा ने जो कहानी बताई, वो उस आदमी की कहानी से बिल्कुल अलग थी। मैं समझ सकता हूँ। डेटा के अनुसार आग लगने के समय उस व्यक्ति के दिल की धड़कन बिल्कुल सामान्य रही होगी। एकदम सही। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह बिल्कुल नहीं जो घबराहट में जान बचाने के लिए अपना सामान समेटकर भाग रहा हो। तो नतीजा ये निकला कि वो आग बीमा के पैसे ऐंठने के लिए जानबूझकर लगाई गई थी। हाँ, और उस व्यक्ति को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही दिल की डिजिटल धड़कन ने धोखा दे दिया। सच में? ये घटना सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये हमारी आज की सच्चाई है। आज की इस विस्तृत चर्चा का आधार एक बेहद प्रभावशाली किताब है जिसका नाम है योर डेटा विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू, पुलिसिंग इन द एज ऑफ सेल्फ सर्वेलेंस। और इसे लिखा है एंड्रू गुथरी फर्ग्यूसन ने। बिल्कुल। और एंड्रू गुथरी फर्ग्यूसन कोई आम लेखक नहीं है।
वो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में कानून के प्रोफेसर हैं। हाँ। वो नई सर्विलेंस तकनीक, पुलिसिंग और क्रिमिनल जस्टिस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और उन्हें उनकी 2018 की किताब द राइज ऑफ बिग डेटा पुलिसिंग के लिए प्रतिष्ठित प्रोज अवार्ड भी मिल चुका है ना? हाँ, और वो अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट के निर्वाचित सदस्य भी है। तो इस शानदार किताब की गहराइयों में जाने से पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट साझा करना है। हाँ, ये जरूरी है। मार्च 2026 से हमारा ये कार्यक्रम अब एक साप्ताहिक श्रृंखला बन गया है। अब से हमारे नए अंक हर रविवार और सोमवार को आएंगे। सही। रविवार के दिन हम किसी क्लासिक रिसर्च पेपर या आज की तरह किसी शानदार किताब की समीक्षा करेंगे। बिल्कुल। जबकि सोमवार का फोकस टॉप टियर पीयर रिव्यू जर्नल के पब्लिकेशंस पर रहेगा। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। हाँ, हम अपने सभी वफादार सब्सक्राइबर्स से बहुत प्यार करते हैं और इस नई पहल का समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। असल बात यह है कि एआई आधारित ऑडियो श्रृंखलाएं पर्यावरण और जलवायु पर काफी भारी पड़ती हैं। हाँ। इन कार्यक्रमों को चलाने वाले बैकएंड डेटा सेंटर्स में पानी और ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है। तो इस श्रृंखला की साप्ताहिक रिलीज को सीमित करना हमारी वैचारिक गहराई को खोए बना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी एक छोटी सी कोशिश है। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसी जिम्मेदारी की भावना के साथ हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि समय निकालकर इस बेहद सोच समझकर लिखी गई किताब को जरूर पढ़ें, चाहे कोई हमारा सब्सक्राइबर हो या नहीं। हाँ, इसका लिंक शो नोट्स में मौजूद है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अकादमिक रिसर्च में नए हैं और अपनी शोध यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये किताब एक मास्टर क्लास है। मतलब अगर हम इस किताब की शैली को समझें तो लेखक ने केवल तथ्य नहीं परोसे हैं। एकदम सही। उन्होंने अपनी रिसर्च को एक बहुत ही तार्किक और कथात्मक ढांचे में पिरोया है, चैप्टर वाइज। एक नए रिसर्चर को ये सीखना चाहिए कि कैसे इस किताब ने शुरुआत सबसे निजी चीजों से की है, जैसे हमारे घर, हमारी चीजें और हमारा शरीर, और फिर धीरे धीरे इसे बड़े कानूनी और सामाजिक मुद्दों से जोड़ा है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि किसी जटिल कानूनी विषय को आम जीवन की समझ के करीब कैसे लाया जाए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसी तार्किक ढांचे का अनुसरण करते हुए सबसे पहले हमारे निजी जीवन की ओर चलते हैं। लेखक ये स्थापित करते हैं कि जिन जगहों को हम अपना सबसे सुरक्षित कोना मानते थे, हमारे घर, वे अब डिजिटल साक्ष्यों के खजाने में बदल चुके हैं। हाँ, हमारा घर अब केवल ईंट और पत्थर का नहीं रहा। वो एक मूक दर्शक भी नहीं है, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। इसे समझने के लिए अरकानसास के उस हॉट टब मर्डर केस का उदाहरण लेते हैं जिसका जिक्र किताब में है। अरे बाप रे, वो केस तो बहुत ही हैरान करने वाला था। है ना? एक घर में 4 दोस्त रात भर पार्टी करते हैं। अगली सुबह उनमें से एक की लाश आंगन के हॉट टब में मिलती है। खून के धब्बे हैं, संघर्ष के निशान हैं। हाँ, और घर का मालिक कहता है कि वो तो रात को ही सो गया था। और बाकी दोनों दोस्त कहते हैं कि वे घटना से पहले ही चले गए थे। मतलब कोई इंसान गवाह था ही नहीं वहाँ। बिल्कुल, एक पुरानी एनालॉग पुलिस इन्वेस्टिगेशन शायद यहीं रुक जाती। लेकिन वो घर एक स्मार्ट होम था। पुलिस ने तुरंत उस घर के डिजिटल गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी। हाँ, उन्होंने नेस्ट थर्मोस्टैट, अमेज़न इको और घर के स्मार्ट वाटर मीटर का डेटा खंगालना शुरू किया। और उसी स्मार्ट वाटर मीटर के डेटा ने दिखाया कि रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच अचानक पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। मुझे ये हिस्सा बहुत विचलित करने वाला लगा। पानी का मीटर सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कितना पानी इस्तेमाल हुआ, वो एक कहानी सुना रहा है। बिल्कुल, पुलिस ने ये अनुमान लगाया कि रात के उस पहर में पानी के इस अत्यधिक इस्तेमाल का मतलब है कि कोई खून के धब्बे धो रहा था या आंगन की सफाई कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे हम खुद पैसे देकर अपने ही घर में एक अदृश्य जासूस बिठा रहे हैं जो हमारी हर हरकत को एक डिजिटल डायरी में लिख रहा है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि कैसे हमारी चीजें सेंसरविलांस का हिस्सा बन गई हैं। सेंसरविलांस? हाँ, लेखक ने ये शब्द गढ़ा है, सेंसर और सर्विलेंस को मिलाकर। अरे वाह, ये तो बहुत सटीक शब्द है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए हर स्मार्ट टीवी, रोबोट वैक्यूम और यहां तक कि स्मार्ट फ्रिज भी लगातार डेटा पैदा कर रहे हैं। हाँ, सेंसरविलांस का मुख्य तंत्र यही है कि ये उपकरण काम करने के लिए पर्यावरण को महसूस करते हैं, उसे डेटा में बदलते हैं और दूर बैठे सर्वर पर भेज देते हैं। और कानून की नजर में उत्पन्न होने वाला ये हर एक डेटा पॉइंट एक संभावित साक्ष्य है, यानी एक सबूत है। एकदम सही।
लेकिन ये केवल घर के उपकरणों तक सीमित नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच गया है, जिसे इंटरनेट ऑफ बॉडीज कहा जा रहा है। डगलस डीट्री का केस इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, डगलस डीट्री, उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या हो जाती है और क्योंकि उन दोनों का उस रात झगड़ा हुआ था, पुलिस सीधा डगलस को मुख्य संदिग्ध मान लेती है। हाँ, वो लगभग जेल जाने ही वाला था। लेकिन उसे उसके फिटबिट ने बचा लिया। डगलस ने पुलिस को बताया था कि वो उस समय सो रहा था। और जब पुलिस ने उसके फिटबिट का डेटा निकाला तो पता चला कि हत्या के संभावित समय के दौरान उसने केवल 12 कदम चले थे। 12 कदम? हाँ, और उसकी हृदय गति एक सोते हुए इंसान की थी। डेटा ने पूरी वैज्ञानिक सटीकता के साथ उसकी बेगुनाही साबित कर दी। और फिर पुलिस को असली कातिल की तलाश करनी पड़ी। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम यहाँ थोड़ा रुककर सोचें तो ये तो क्रिमिनल जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ी जीत लगती है। कैसे? मेरा मतलब है, एक बेगुनाह व्यक्ति जेल जाने से बच गया और आर्कांसस के हॉट टब मर्डर में या पेसमेकर वाले बीमा घोटाले में असली अपराधी पकड़े गए। हाँ, ये तो है। तो अगर ये तकनीक न्याय सुनिश्चित कर रही है, तो एक आम इंसान को जो कानून का पालन करता है, उसे इस बात से क्यों डरना चाहिए कि उसका स्मार्ट रोबो वैक्यूम घर का नक्शा बना रहा है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। सतह पर देखने से ये तकनीक न्याय व्यवस्था के लिए एक वरदान लगती है। लेकिन समस्या डेटा के होने में नहीं है, बल्कि उस डेटा तक पहुंचने की अनियंत्रित कानूनी शक्ति में है। हम एक कानूनी शून्य या लीगल वैक्यूम में जी रहे हैं। लीगल वैक्यूम? हाँ, जैसे अमेरिका का चौथा संशोधन जो अनुचित तलाशी और जब्ती से बचाता है, वो एनालॉग युग में लिखा गया था। उस समय घर की तलाशी का मतलब था कि पुलिस को दरवाजा तोड़कर अंदर आना होगा। बिल्कुल, जो एक बहुत ही स्पष्ट और भौतिक अतिक्रमण था। आज पुलिस को आपका दरवाजा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने सारे रहस्य, अपनी सारी आदतें खुद ही गूगल, अमेज़न या एप्पल जैसी कंपनियों के सर्वर पर अपलोड कर दी हैं। एकदम सही। और यहीं पर थर्ड पार्टी डॉक्ट्रिन यानी तीसरे पक्ष का सिद्धांत खेल में आता है। ये सिद्धांत क्या कहता है? कानूनी तौर पर यह सिद्धांत ये मानता है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपनी जानकारी किसी तीसरे पक्ष को दे दी है, जैसे कि किसी टेक कंपनी को, हाँ, तो वो उस जानकारी पर निजता है प्राइवेसी के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अरे बाप रे! कानून की नजरों में निजता एक बुलबुला है। जब तक जानकारी आपके दिमाग में है या आपके बंद कमरे में भौतिक रूप में है, वो सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही मेरी स्मार्ट वॉच मेरे दिल की धड़कन का डेटा किसी कंपनी के सर्वर पर भेजती है, वो बुलबुला फूट जाता है। बिल्कुल, वो जानकारी अब आपकी नहीं रही। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि हमने अनजाने में अपने घर की एक अतिरिक्त चाबी इन टेक कंपनियों को दे दी है और पुलिस को वो चाबी हासिल करने के लिए हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेखक फर्ग्यूसन का एक बहुत ही मारक वाक्य है कि आप अपराधी साबित होने से बस एक वारंट दूर हैं। आमतौर पर समाज में ये धारणा है कि वारंट हमारी सुरक्षा के लिए होता है, कि बिना किसी ठोस सबूत के जज वारंट नहीं देगा। डिजिटल युग में यह धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। आज वारंट एक ढाल नहीं बल्कि एक मास्टर की है। मास्टर की? हाँ, जब पुलिस किसी टेक कंपनी के पास वारंट लेकर जाती है तो उन्हें केवल एक विशिष्ट घटना की जानकारी नहीं मिलती, उन्हें महीनों या सालों का पूरा डिजिटल जीवन मिल जाता है। लोकेशन हिस्ट्री, वॉइस कमांड्स, सोने का पैटर्न, सब कुछ। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बहुत डरावना है। जो डेटा आज किसी वास्तविक अपराधी को पकड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कल वही डेटा राजनीतिक विरोधियों या पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। एकदम। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष, वामपंथी या दक्षिणपंथी की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये किसी एक विचारधारा का मुद्दा नहीं है। हाँ, हम बस किताब के उस विचार को रख रहे हैं कि सरकार के पास असीमित सर्विलांस की शक्ति का होना किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। उस शक्ति का दुरुपयोग किसी भी नागरिक के खिलाफ हो सकता है। और सबसे विडंबना की बात यह है कि ये सर्विलांस सरकार खुद नहीं बना रही है। कंपनियां डर का व्यापार कर रही हैं। किताब में #डिस्टोपिया प्राइम के विचार पर बहुत जोर दिया गया है। #डिस्टोपिया प्राइम अमेज़न के रिंग डोरबेल कैमरे और उनके नेबर्स ऐप का उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट करता है। ये कंपनियां एक तरह का निर्मित डर पैदा करती हैं ना? बिल्कुल, वे समाज को ये विश्वास दिलाती हैं कि आस पड़ोस बहुत असुरक्षित है और सुरक्षा का एकमात्र तरीका उनके कैमरे लगाना है।
और हम उस सुरक्षा को खरीद लेते हैं। लेकिन असल में हम जो कर रहे हैं वो एक सर्विलांस एज अ सर्विस को अपने ही आस पड़ोस में स्थापित करना है। रिंग डोरबेल केवल घर के दरवाजे की निगरानी नहीं करता, उस सड़क से गुजरने वाले हर इंसान, हर गाड़ी को रिकॉर्ड करता है। और फिर पुलिस इन कंपनियों के साथ समझौते करके उस पूरे नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त कर लेती है। मतलब ये एक ऐसा निगरानी तंत्र है जिसे नागरिकों ने खुद अपने पैसे से खरीद कर लगाया है। हाँ, और ये एनालॉग पुलिसिंग और डिजिटल पुलिसिंग के बीच के एक बहुत बड़े बुनियादी अंतर को सामने लाता है। जब हम किताब के समाधान वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं, डिजिटल अलग है। डिजिटल इज डिफरेंट। हाँ, यह समझना जरूरी है कि डिजिटल सर्विलेंस केवल एनालॉग सर्विलेंस का कोई तेज संस्करण नहीं है, यह अपनी प्रकृति में ही कुछ और है। बॉल्टीमोर स्पाई प्लेन का उदाहरण इस अंतर को बहुत गहराई से समझाता है। बॉल्टीमोर स्पाई प्लेन। हाँ, बॉल्टीमोर में पुलिस ने एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसमें एक प्लेन शहर के ऊपर लगातार उड़ता रहता था। अच्छा। वह प्लेन हाई रेजोल्यूशन कैमरों से पूरे शहर की लगातार तस्वीरें लेता था। एक ही समय में पूरे शहर के हर इंसान, हर गाड़ी की हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था। बाप रे। अगर शहर के किसी कोने में कोई अपराध होता तो पुलिस बस उस प्लेन की रिकॉर्डिंग को पीछे ले जाकर देख सकती थी कि अपराधी कहां से आया था और घटना के बाद कहां गया। अगर हम इसकी तुलना पुराने समय की पुलिसिंग से करें तो पहले अगर पुलिस को किसी पर शक होता था तो एक अधिकारी को उस व्यक्ति का पीछा करना पड़ता था। हाँ, उसमें मेहनत लगती थी, समय लगता था, और वो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित था। पुलिस पूरे शहर का एक साथ पीछा नहीं कर सकती थी। संसाधनों की वो कमी ही हमारी निजता की सबसे बड़ी रक्षक थी। एकदम सही। लेकिन डिजिटल पुलिसिंग में संसाधनों की वो बाधा खत्म हो गई है। एक मशीन पूरे शहर पर 24 घंटे नजर रख रही है। ये केवल पैमाने का अंतर नहीं है, ये शक्ति के संतुलन में एक बुनियादी बदलाव है। इसलिए लेखक का तर्क है कि न्यायिक और विधायी प्रणाली को भी अपनी प्रतिक्रियाएं बदलनी होंगी। जब जज डिजिटल डेटा से जुड़े मामलों को देखें तो वे ये ना समझें कि ये किसी के घर में घुसकर कोई कागज या हथियार ढूंढने जैसा है। हाँ, क्योंकि डेटा हमारी पूरी जिंदगी, हमारी सोच और हमारे व्यवहार का विस्तृत खाका है। बिल्कुल। इसके लिए कानून के नए और अधिक सख्त मापदंड होने चाहिए। एक रिसर्चर के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही शानदार तरीका है किसी समस्या को प्रस्तुत करने का। लेखक ने सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाई बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाई। हाँ। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक आम इंसान इस पूरी व्यवस्था को कैसे समझे? लेखक ने एक वैचारिक ढांचा दिया है जिसे वे द टायरेंट टेस्ट कहते हैं। द टायरेंट टेस्ट ये किताब का सबसे मजबूत विचार है। अगर मैं इस टेस्ट को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करने की कोशिश करूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे कल ही अपनी स्मार्ट वॉच, अपना Amazon इको सब कबाड़ में फेंक देना चाहिए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लेकिन इसका जवाब नहीं है। अच्छा। लेखक तकनीक के खिलाफ नहीं है। वे ये नहीं कह रहे कि समाज को वापस पाषाण युग में लौट जाना चाहिए। तो फिर टायरेंट टेस्ट का असल मकसद क्या है? टायरेंट टेस्ट का उद्देश्य तकनीक को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके डिजाइन में संरचनात्मक सुरक्षा की मांग करना है। यह टेस्ट इस बुनियादी मानवीय सत्य पर आधारित है कि सत्ता का दुरुपयोग कभी न कभी जरूर होगा। यह मानकर चलना चाहिए। हाँ, इतिहास भी यही बताता है। इसलिए किसी भी नई तकनीक को अपनाने से पहले ये सवाल पूछना चाहिए, अगर कल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन या कोई क्रूर तानाशाह सत्ता में आ जाए तो क्या मैं चाहूंगा कि ये डेटा उसके पास हो? बाप रे, अगर मैं इस नजरिए से सोचूं तो जवाब बहुत ही डरावना है। बिल्कुल। अगर ये सवाल हो कि क्या कोई भी इंसान चाहेगा कि उसके घर के हर कमरे की ऑडियो रिकॉर्डिंग या उसके हर पल की लोकेशन हिस्ट्री किसी तानाशाह के पास हो, तो जाहिर है जवाब हमेशा ना ही होगा। और यही इस टेस्ट की सफलता है। अगर जवाब ना है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो तकनीक अपने वर्तमान रूप में असुरक्षित है। हाँ। ये टेस्ट समाज को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें कंपनियों से ऐसी तकनीक की मांग करनी चाहिए जो डेटा को सिर्फ हमारे पास ही सुरक्षित रखे, जिसे लोकल स्टोरेज कहते हैं ना। हाँ, या जो कुछ समय बाद डेटा को अपने आप नष्ट कर दे। हमें ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो पुलिस को केवल एक साधारण वारंट के आधार पर इस असीमित व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने से रोकें। क्योंकि सुविधा के नाम पर आजादी और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। इस पूरी चर्चा का अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो यह केवल कानून या तकनीक के बारे में नहीं है।
हाँ, ये इस बारे में है कि कैसे हम बहुत ही खामोशी से अपनी आज़ादी का सौदा कर रहे हैं। बिल्कुल। जब हम बिना सोचे समझे किसी ऐप या डिवाइस के नियम और शर्तों पर आई एग्री क्लिक करते हैं, तो हम केवल एक उपकरण चालू नहीं कर रहे होते हैं। हम अपने चारों ओर एक डिजिटल पिंजरा बुन रहे होते हैं। और सेल्फ सर्वेलेंस का यह योग इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसमें कोई तानाशाह हम पर बाहर से नजर नहीं रख रहा है। हाँ। हम खुद अपने पैसे खर्च करके अपने निगरानी तंत्र के उपकरण खरीद रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत डेटा अब एक ऐसी संपत्ति बन गया है जिसे किसी भी क्षण हमारे ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये सब इतनी सहजता से हो रहा है कि अक्सर किसी को इसका एहसास भी नहीं होता। हाँ, सुविधा ने हमें इस बात के प्रति अंधा कर दिया है। इस गहन विश्लेषण को विराम देने से पहले एक बहुत ही विचलित करने वाला विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। ये विचार पहले चर्चा में नहीं आया था, लेकिन बहुत अहम है। हाँ, बताइए। आज हमारे ये स्मार्ट डिवाइस हमारे हर एक सामान्य आदत को लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे उठने का समय, दिल की धड़कन, हमारे काम पर जाने का रास्ता, सब कुछ एक पैटर्न के रूप में दर्ज हो रहा है। बिल्कुल। और एल्गोरिथम ये सीख रहे हैं कि हमारा सामान्य व्यवहार क्या है। हाँ, मशीनें हमारी दिनचर्या समझ रही हैं। तो जरा सोचिए, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हमारे रोजमर्रा के रूटीन में एक बहुत ही छोटा सा बदलाव आ जाए, जैसे अचानक किसी रात देर तक जागना या किसी नई जगह जाना, और उसे कानूनी रूप से एक संदिग्ध व्यवहार मान लिया जाए, वो भी तब जब कोई अपराध हुआ ही ना हो। हाँ, बाप रे, ये तो सच में बहुत डरावना है। सिर्फ इसलिए कि आपका डिजिटल डेटा कह रहा है कि आप अपने ऐतिहासिक सामान्य व्यवहार से भटक गए हैं। क्या केवल ये भटकाव ही जांच का आधार बन जाएगा? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीनें तय करेंगी कि हमारा सामान्य व्यवहार क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समाज को बहुत जल्द खोजना होगा। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारी इस ऑडियो श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर रविवार और सोमवार हम इसी तरह नए विचारों और शोध के साथ उपस्थित होंगे। अगली चर्चा तक शांत रहें, जागरूक रहें और अपने डेटा के प्रति सतर्क रहें। Forestil dig, at du står foran en gruppe af de her virkelig kloge unge jurastuderende. Ja. Du kigger ud over auditoriet, der ligesom er fyldt med fremtidens advokater og dommere, og så stiller du dem et meget, meget simpelt spørgsmål. Du spørger, hvor mange af jer har brugt et fysisk papirkort til at finde vej det seneste år? Og svaret er selvfølgelig 0. Ikke en eneste. Præcis. Der er absolut ingen hænder i vejret. Så spørger du i stedet, altså hvor mange af jer bruger telefonen eller bilens indbyggede GPS til at navigere rundt i hverdagen? Og så ryger alle hænder op. Samtlige hænder i lokalet. Lige præcis. Alle bruger det jo. Og det er så her, du lader bomben falde og spørger dem, hvor mange af jer egentlig er klar over, at politiet kan få adgang til en komplet, ufiltreret historik over alle jeres bevægelser, bare med en helt simpel dommerkendelse. Og det der, det bliver helt stille. Luften forlader simpelthen lokalet fuldstændig. Ja, det gør det virkelig. For det er lige det øjeblik, at det går op for de studerende, og ja, i virkeligheden for os alle sammen, når vi tænker over det, at vi er fanget i et enormt, usynligt overvågningsnet. Og det mest foruroligende er ikke engang, at nettet eksisterer. Nej. Det er, at vi har spundet det fuldstændig frivilligt selv. Det usynlige net, det er lige netop omdrejningspunktet for vores samtale i dag. Vi tager nemlig fat i den her dybt fascinerende bog, Your Data Will Be Used Against You, Policing in the Age of Self-Surveillance. Den er skrevet af Andrew Guthrie Ferguson. En virkelig fremragende bog. Absolut. Og hvis du som lytter ikke kender ham, så er han juraprofessor ved George Washington University Law School. Og han er jo altså en af de absolut førende nationale eksperter i USA, når vi taler nye overvågningsteknologier og moderne politiarbejde. Og strafferet for den sags skyld. Ja, han er en sværvægter. Han skrev også The Rise of Big Data Policing, som vandt den der prestigefyldte Prosy-pris i 2018. Og så er han valgt som medlem af The American Law Institute. Så han ved om nogen, hvad der sker, når rå statsmagt ligesom møder moderne teknologi. Lige netop. Men inden vi går i gang med at pakke bogen ud, så har jeg lige en vigtig besked her i fortrolighed, kan man sige, til dig, der lytter.
Fra med denne måned, marts 2026, der skifter vi nemlig format. Vi udkommer nu ugentligt hver søndag og mandag. Det er et ret spændende skift. Det er det. Søndag bliver dedikeret til de her lidt mere klassiske artikler eller boganmeldelser, ligesom i dag, og mandag fokuserer så på publikationer fra topniveau peer-reviewed tidsskrifter. Og grunden til, at vi gør det her, det er simpelthen et spørgsmål om klima. Ja, for det kræver massiv computerkraft at drive de her AI-assisterede systemer. Rigtig meget. Det belaster natur og klima ret hårdt, især med det her enorme vandforbrug, der er ude i datacentrene. Så ved at begrænse vores udgivelser til 2 gange om ugen, så er det altså vores måde lige at give lidt tilbage til klimakampen på. Uden at vi går på kompromis med kvaliteten, naturligvis. Præcis. Vi mister intet af den her rigdom i vores intellektuelle diskussioner, og vi vil bare sige tusind tak til vores loyale abonnenter for støtten til det her initiativ. Det betyder rigtig meget. Det gør det. Og uanset om du abonnerer på kanalen eller ej, så vil jeg virkelig opfordre dig til at tage dig tid til at læse den her utrolig gennemtænkte bog. Vi har lagt et link i vores show notes. Og vores vinkel i dag er faktisk lidt speciel, ikke? Jo. Vi vil nemlig gennemgå bogens struktur og skrivestil kapitel for kapitel. Det er specielt tænkt som en hjælpende hånd til dig, der måske er helt ny inden for akademisk forskning, og lige står og skal til at starte din egen forskningsrejse. Det er en fantastisk måde at lære på. At se, hvordan en mester bygger sit argument op. Så lad os kigge på det. Bogens første del fra kapitel 1 til 6. Hvordan sætter han scenen der? Altså formålet her er at vise lytteren og læseren, hvordan man i et akademisk værk etablerer selve problemets omfang. Han bruger første del til systematisk at kortlægge gerningsstedet, kan man sige. Og det er ret genialt struktureret. Hvordan det? I stedet for at gøre det kronologisk, så gør han det tematisk. Han inddeler kapitlerne virkelig pædagogisk. Vores hjem, vores ting, vores kroppe, vores byer, vores papirer og vores likes på de sociale medier. Det er jo en fantastisk skabelon for nye forskere. At tage det her fuldstændig uoverskuelige emne, som global overvågning er, og så bryde det ned i logiske bidder. Lige præcis. Han argumenterer for, at vi har accepteret det, han kalder overvågning som en service, altså under påskud af bekvemmelighed. Okay, lad os pakke det her ud en gang. For det svarer jo nærmest til, at vi helt frivilligt har inviteret en privatdetektiv ind i vores stue. Vi giver ham en kop kaffe, sætter ham i hjørnet og beder ham notere alt, hvad vi overhovedet foretager os. Ja, det er en meget rammende analogi. Vi kalder det bare for smart home-teknologi i stedet for en privatdetektiv. Nidelam. Forskellen er bare, at denne her detektiv i hjørnet deler alt med staten. Ferguson bruger 2 virkelig rystende eksempler fra bogen til at fastholde den her historiefortælling. Den ene handler om en pacemaker. Ja, den historie er vild. Ja, helt utrolig. Det var en mand, der hævdede, at han var flygtet i total panik fra sit brændende hus. Han sagde, at han opdagede ilden, vågnede op og løb for livet. Hvilket jo lyder som en logisk forklaring. Indtil politiet fik en dommerkendelse og hentede data fra hans intelligente pacemaker. En pacemaker i dag er jo dybest set en avanceret computer inde i kroppen. Ja. Og den fortalte en helt anden historie. Den målte hans hjerterytme og bevægelser, og der var intet, der indikerede panik eller et forhøjet stressniveau på det tidspunkt, han påstod at være flygtet. Wow! Hans hjerterytme var helt rolig, mens han gik rundt inde i huset før branden. Det endte med at fælde ham for ildspåsættelse. Det er jo simpelthen vores egne kroppe, der vidner imod os. Præcis. Det er det, dataen gør. Og det andet eksempel, han fremhæver, handler om et ungt par. Lidt ligesom Romeo og Julie i overvågningsalderen. Ja, det er et meget tungt og aktuelt eksempel. Det er et ungt par, der bor i en amerikansk stat, hvor abort er blevet kriminaliseret. Og lad mig bare slå fuldstændig fast herover for dig, der lytter. Vi tager absolut ingen politisk stilling til abortlovgivning. Vi kigger udelukkende på dette for at illustrere teknologiens magt. Fuldstændig som forfatteren gør det. Lige præcis. Det handler om de digitale spor. Ja, for det unge par, de er nødt til at køre til en medicinsk klinik i en anden stat. Hvordan bliver de sporet der? Det starter allerede hjemme på værelset med en helt simpel Google-søgning efter klinikken. Det efterlader et IP-spor. Så sætter de sig ud i deres bil, og de bruger bilens navigationssystem. Og moderne biler sladrer jo om alt. Alt. Bilens telematiksystem sender lokationsdata tilbage, og undervejs pinger deres smartphones konstant de lokale telemaster langs motorvejen. Men det stopper ikke engang der. Gør det ikke? Nej, for på deres telefoner har de jo helt almindelige lokationsapps. Måske en vejr-app eller et spil. De apps samler GPS-koordinater med få sekunders mellemrum
og sælger dem videre. Tilsammen tegner alt dette et kirurgisk præcis kort over hele deres rejse, fra deres indkørsel og direkte ind på klinikkens parkeringsplads. Det er altså rystende, og det får mig til at spørge dig, der lytter med derude. Hvilke digitale spor efterlod du dig egentlig fra du stod op i morges, og til du begyndte at lytte til os to her? Sikkert hundredvis, hvis ikke tusindvis. Sandsynligvis. Og det leder os jo meget naturligt videre til bogens anden del, altså kapitel 7-9. For her bevæger den gode forsker sig jo fra selve observationen og over i konsekvensberegningen. Ja, for nu har han ligesom vist os problemet, og i anden del, der introducerer han 3 overordnede problematikker. Magt, privatliv og praksis. Power, privacy og praxis på engelsk. Det er en klassisk, virkelig stærk akademisk tretrinsraket. Det er det. Den gør det enormt nemt for læseren at forstå de bagvedliggende strukturer. Men her er det, hvor det bliver virkelig interessant. Fordi lad mig lige agere djævelens advokat et kort øjeblik på vegne af vores lyttere. Hvis alt den her data rent faktisk fanger mordere og brandstiftere ligesom manden med pacemakeren, er det så ikke bare helt fantastisk? Altså, hvorfor skal vi lovlydige borgere overhovedet bekymre os om det? Det er det absolut vigtigste spørgsmål at stille. Og Fergusons svar, det er helt roligt og rationelt. Problemet er magtforskydningen. Uddyb lige det. Altså, det er jo ikke kun de onde, der bliver fanget i nettet. Vores retssystem er bygget på nogle sikkerhedsmekanismer, kravet om begrundet mistanke og dommerkendelser. Men de mekanismer er alt for svage til at håndtere mængden og arten af nutidens data. Så domstolene følger simpelthen ikke med? Slet ikke. En dommer, der måske ikke engang forstår den underliggende teknologi, sætter bare en underskrift på et stykke papir, og det er ofte det eneste, der står mellem dig og en totalt digital blottelse. Et godt eksempel er de her geofence-kendelser. Hvad går de ud på? Normalt skal politiet mistænke en bestemt person. Men med et geofence beder de bare et firma som Google om at udlevere data på alle telefoner, der befandt sig i et bestemt område på et bestemt tidspunkt. Så de tegner bare en cirkel på et kort og siger, giv os alle derinde. Præcis. Du kan bare gå en tur med din hund forbi et gerningssted, og pludselig er din data i politiets varetægt. Det er jo at vende bevisbyrden fuldstændig på hovedet. Det er præcis, hvad det er, og det leder over i det 3. P i hans model, praksis, eller det, han kalder policy making by procurement. Ja, politikskabelse gennem indkøb. Det er en genial pointe. Hvordan fungerer det i virkeligheden? Altså, normalt tænker vi jo, at vores politikere diskuterer og vedtager lovene om, hvordan samfundet skal overvåges. Men i praksis former politiet meget af den offentlige politik, simpelthen bare ved at købe teknologi fra private firmaer. Som for eksempel? Som for eksempel Ring dørklokker med indbyggede kameraer, eller de køber adgang til gigantiske databaser fra datamailer som Fuck Data Science. Det sker uden nogen som helst demokratisk debat. Vent, så politiet køber sig bare til adgang. De behøver ikke at bygge overvågningen selv. Nej, de tegner bare et abonnement. Længe inden lovgiverne overhovedet har nået at debattere, om vi som borgere overhovedet ønsker de her såkaldte smarte byer, fyldt med sensorer på hvert et gadehjørne, så har politiet allerede købt adgang til dataen. Det er jo det er kortslut hele den demokratiske proces. Fuldstændig. For når først det er købt, er teknologien implementeret. Det bringer os heldigvis til del 3. Kapitel 10-12 samt konklusionen. For en god forsker stopper jo ikke bare ved dommedagsprofetierne, vel? Man er også nødt til at komme med nogle løsningsforslag. Ja, ellers bliver det for deprimerende. Og Ferguson er systematisk her også. Han adresserer løsningerne fra 3 vinkler, gennem domstolene, lovgiverne og individet. Lad os tage domstolene først. Hvad kan de gøre? De skal simpelthen fremtidssikre lovgivningen. I USA handler det meget om det 4. tillæg til forfatningen. De skal indse, at digital data er lige så privat, hvis ikke mere end det fysiske indhold i vores hjem. Og lovgiverne? Der handler det om lokal demokratisk kontrol. Byråd og lokalpolitikere skal kræve, at politiet får godkendelse, før de køber den her slags overvågningsteknologi. Det skal frem i lyset. Og det bringer os til den sidste, individet. Og her, hvad betyder alt det her egentlig for dig, der lytter? Jeg tænker tit på det som at bygge et hus af glas, og bagefter prøve at hænge gardiner op. Det er et fantastisk billede, for det er næsten umuligt at gøre bagefter. Ja, bogen argumenterer jo for, at vi skal bygge murene, før vi overhovedet flytter ind. Vi har forbrugermagt til at kræve teknologi, der opererer med privacy by design, hvor data slettes automatisk, eller kun ligger på vores egen enhed. Lige præcis. Og det er her i konklusionen, at Ferguson introducerer sit absolut stærkeste retoriske værktøj. Han kalder det for tyranttesten. Tyranttesten. Den er vild.
det er jo et utrolig elegant værktøj at bruge i en akademisk tekst. Hvordan formulerer han den? Den er enormt simpel, men virkelig slagkraftig. Han siger, at vi roligt kan vurdere enhver ny teknologi ud fra et eneste spørgsmål. Og det er? Ville vi være trygge ved at lade en tyran kontrollere dette system? Wow! Ja. Hvis du kigger på en gigantisk database med lokationsdata på alle landets borgere, og du tænker, vil jeg give adgang til det her til en despotisk leder? Hvis svaret er nej, så bør den teknologi simpelthen ikke bygges eller sælges. For politiske vinde kan skifte hurtigt. Det er så sandt. Den infrastruktur, vi bygger i dag for bekvemmelighedens skyld, det er morgendagens undertrykkelsesværktøj, hvis det falder i de forkerte hænder. Nøjagtigt. Og det er pointen. Vi skal designe vores systemer, som om vi forventer, at det en dag vil blive misbrugt. Det er en virkelig skarp og lidt ubehagelig indsigt, men utrolig vigtig. Og for dig, der er i gang med at lære akademisk formidling, se lige, hvordan Ferguson gjorde det her. Fra han startede med en observation, til han kortlagte konsekvenserne og slutligt præsenterede en handlingsorienteret løsningsmodel. Det er en mesterklasse i formidling. Det er det virkelig. Husk, du kan finde linket til bogen nede i show notes. Men inden vi runder helt af, vi har talt utrolig meget om alle de data, du skaber i dag. Ja, konstant. Men prøv lige at tænke over det her, når du lægger telefonen fra dig i aften, i en verden, hvor alle konstant udsender de her digitale signaler. Hvad sker der så den dag, hvor det, at du slukker din telefon, går offline og vælger ikke at skabe data, i sig selv bliver betragtet som en mistænkelig adfærd af algoritmerne? Bliver fraværet af dine data pludselig det ultimative bevis imod dig?